So, hello guys, welcome back to the live stream and today we are going to play Genshin Impact और आज हम लोग guys इस मैं सोच रहा हूँ कि कैरेक्टर स्टोरी चालू करें हम लोग इसका क्या कहते हैं क्लाउड रिटेनर का एंड उसके अलावा हम एक्सप्लोरेशन भी कर ही सकते हैं क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो पड़ा हुआ है एंड विल सी। ठीक है, अभी मेरा इवेंट फिनिश करना बाकी, तो आज वो इवेंट फिनिश करूंगा मैं क्योंकि 2 दिन में इवेंट खत्म हो रहा है एंड दैट्स गोइंग टू बी प्लान फॉर टुडे स्ट्रीम को। सो थैंक यू गाइस फॉर जानेंगे, जितने बजे तक स्ट्रीम पे आए गाइस लाइक कर देना गाइस, स्ट्रीम को जितने स्ट्रीम पे नहीं हुआ गाइस मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रीम, लेट्स प्ले द गेम एंड चलते हैं। सबसे पहले आप लोग चैट पढ़ते हैं, उसके बाद जाएंगे गेम के अंदर एंड गेम को एंजॉय करेंगे। तो हमें दिख रहा है सबसे पहले आज स्ट्रीम पे सौर्य आए हैं, तो हेलो सौर्य, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो फ्रैगा, वेलकम टू द स्ट्रीम। हेलो R34, वेलकम टू द स्ट्रीम। कैन यू रिव्यू माई अकाउंट आफ्टर 69 लाइक्स? बिल्कुल फ्रैगर, 69 लाइक्स हो जाएंगे तो बिल्कुल कर देंगे तुम्हारा रिव्यू। सुजा भाई की शादी इनकमिंग कुछ भी। कौन सा बिल्डिंग अभी प्रोग्रेस, कौन सी बिल्डिंग अभी भी प्रोग्रेस है? कोई तो बिल्डिंग प्रोग्रेस है, तुम उसकी चिंता मत करो फ्रैगर, वो हमारी दिक्कत है। भाई मैं आया हूँ सबसे पहले, मुझे तो सौर्या की चैट दिख रही है फ्रैगर अब मेरे मोबाइल में, तो मेरी गलती नहीं है। ये यूट्यूब को बोलो कि उसने सौर्या का नाम पहले क्यों दिखाया मुझे यहाँ पे। तो मेरी गलती नहीं है गाइस, लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाए हैं एंड रिफ्रेश कहाँ से करूँ? मोबाइल पे रिफ्रेश नहीं होता ना, ये बंद करके चालू करना होता है, रिफ्रेश नहीं होता मोबाइल पे, पीसी में होता है रिफ्रेश तो फ्रैगर। एंड चलते हैं गाइस, स्ट्रीम को चालू करते हैं एंड चलते हैं, सबसे पहले का मिशन करके आते हैं। एंड जैसा कि मैंने बोला था रात में गाइस स्ट्रीम करेंगे, तो आज हम लोग कर रहे हैं एंड ये स्ट्रीम हमारी 11:30 12 तक चलेगी, उसके बाद फिर हम सब सोने जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग कमीशन करने। हमारा इनाजुमा डला हुआ है अभी कमीशन, तो इनाजुमा जाना पड़ेगा हमको। एनीवे कैसे हो सुजय भाई? बढ़िया हाल चाल है हमारे, तुम्हारे कैसे हाल चाल है? ब्रो व्हाट द फक हैपेंड टू एडसेंस? पांच पांच एड्स दे दिया। इसलिए बोलते हैं नकली वाले एडसेंस इस्तेमाल मत किया करो सौर्या, असली वाले इस्तेमाल किया करो। कब तक नकली वाले चीजों से काम चलाओगे तुम, ये बताओ। वैसे पता है आजकल YouTube की एड्स जो है वो ब्लॉक नहीं होती हैं, बट ये होता है कि तुम्हारा जैसे 5-5 या 6-6 मिनट की एड्स आ रही है ना YouTube पे, तो वो स्किप होके सीधा स्किप बटन दे देता है एड ब्लॉकर्स आजकल, तो प्रॉपरली ब्लॉक नहीं कर रही है कोई भी एड ब्लॉकर अभी, या ऐसा कह सकते हो कह नहीं कर नहीं पा रही है। हाँ आपके ही स्ट्रीम पे YouTube is forcing us to buy premium। एग्जैक्टली बट करने दो उनको फोर्स, वो नहीं कुछ उखाड़ पाएंगे। लैपटॉप से आऊंगा तो एड्स ही नहीं आएंगे। ये ओपरा ब्राउजर वाले इंसान हो ना, हम सब समझ रहे हैं क्यों सौर्या। एज प्लस यू ब्लॉक ओपरा नहीं चलाया आज तक जिंदगी में। तुम माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करते हो सौर्या? है, मेरे को लगता है तुम वो 1% लोगों में है जो माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल करता है। बिकॉज आइदर लोग फायरफॉक्स चला लेंगे, क्रोम चला लेंगे, ओपरा चला लेंगे, बट एज कोई नहीं चलाता है। तुम एज चलाते हो। गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम बनाए हैं। हाँ नहीं, ब्रेव भी कम चलाते हैं, ब्रेव ब्रेव भी उतने ज्यादा लोग नहीं चलाते हैं।
तुझे भाई अर्ली 4.6 में आएगी। हाँ, फायरफोर्स परेशान हूँ, बस एज ट्राई कर रहा मैं कि वीएस कोड के साथ क्या क्या फायदा है उसका। क्यों भाई, तेरे को पता है सर, अगर तेरे को अगर डेवलपमेंट या टेस्टिंग वगैरह कुछ करना है तो फायरफॉक्स बेटर है, क्योंकि फायरफॉक्स ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करता है तुम्हारी एडिटिंग वगैरह के लिए, तुमको यार कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए। हाउ कैन यू से कि फायरफॉक्स में मज़ा नहीं आया तेरे को? फायरफॉक्स ही सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। ये कौन सा वर्जन चल रहा है? 4.4। हाँ, 10 पुल कर दो। है ही नहीं हमारे पास पुल्स, कहाँ से कर ले धीरज? दो हमको 10 पुल हम करते हैं अभी। हमारे पास नहीं होंगे पुल, हमारे पास मुश्किल से 2 पुल पड़े होंगे। नहीं है हमारे पास, एक भी पुल नहीं पड़े हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मजा नहीं आया, बस देखा रहा था कि क्या डिफरेंस है दोनों में। कहाँ गए? उड़ा दिए तुमको पता नहीं है क्या? लास्ट स्ट्रीम पे ही तो हमने उड़ाए थे, उसके बाद हमारे कलेक्ट ही कहाँ हुए हैं। वेपन वरना में उड़ा दिए थे हमने सारे के सारे, उसके बाद एक भी नहीं बचे हैं। कुछ मिला? हाँ मिल गया ना हमको। शाओ का वेपन चाहिए था, शाओ का वेपन मिल गया है। एक सेकंड में यार कितनी एड्स आती है मोबाइल पे। अब 4.5 में कोई पुल नहीं कर रहा फ्रैगर, सब कर रहा है भाई। न्यूलेटे जिसको चाहिए ना वो सब कर रहा है पुल, जिसको काजुआ चाहिए वो सब पुल कर रहा है। ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि कोई पुल नहीं कर रहा है। लोगों को बहका रहा है धीरज, झूठी बात बोल बोल के। जब से एचएसआर स्टार्ट किया तब से जेंसिन हद से ज्यादा कम कर दिया है। मेरा तो जेंसिन और एचएसआर दोनों ही कम चल रहा है, तुमको पता है ये चीज? Into the wind. Settle down. उल्टा मैं दूसरा गेम खत्म कर दिया, पता है? ये जेंसिन के इवेंट ना कर पाया मैं। एक वीक हो गया, 420 प्रीमोज मिस कर दिए। अच्छा तो जेंसन खोला ही नहीं है? गलत बात है, सॉरी, ऐसा नहीं करते हैं। What a great day to have both Nivulete and Kazuan. फर्स्ट हाफ स्किप ही है लोगों का, सेकंड हाफ करेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन वेपन बैनर, पता है वो लोग दोनों बैनर पे पुल मारेंगे। अगर अच्छा बैनर आया तो फिर वो क्या कहते हैं स्किप मारेंगे लोग, एक पे पुल मारेंगे। तो ऐसा नहीं है स्किप करेगा कोई भी, एटलीस्ट एक बैनर में पुल मारेंगे ही मारेंगे, जिसके पास दोनों में से कोई भी नहीं है। जिन पर है वो करेंगे स्किप इजली फ्रैगुर। एक ही सपना है मेरा, नीलू C6 कर दूं फिर गेम छोड़ दूंगा शायद से। भाई सॉरी, नीलू C6 कौन करता है? क्या कहते हैं, तू नहीडा C6 कर ले, तू चाहे क्या कहते हैं काजुआ C6 कर ले, चाहे न्यूलेट C6 कर ले, नीलू C6 कौन करता है? इत्तो चियोरी का वेपन बैनर अच्छा है। 4.5 स्किप। कीर्ति तू स्किप कर रहा है 4.5? सुजा भाई न्यू एरिया, अच्छा तेरे पास तो न्यूलेट है ना? Water comes in इसलिए many flavors to the discerning palate.
Mondstadt's water is crisp and pure, while water from Liyue has an enduring aftertaste. थोड़ी देर खड़ा ना रखो, बोलना चालू कर देते हैं भाई कैरेक्टर। सुजो भाई, न्यू एरिया में जो ब्लू चीज मिली है उसका क्या यूज है? उसको क्वेस्ट कंप्लीट करोगे ना, स्टोरी क्वेस्ट, वहाँ की साइड स्टोरी क्वेस्ट, तो तुम्हारा एक ट्री टाइप से खुलेगा या पूल टाइप का खुलेगा, उसमें तुमको वो देना पड़ता है, वो ब्लू चीज को रिवॉर्ड मिलते हैं। अलग ही सपना है मेरा भाई, मुझे समझ नहीं आता क्या करते रहता। अफीम खा के बैठा हूँ शायद। हो सकता है भाई अफीम खाया हो तूने सौर्या। तेरा ड्रग टेस्ट कराना पड़ेगा उसके लिए, तो पता करने के लिए। या तो क्या कहते हैं, हम फ्रैगर से खून तेरा चटवा देते हैं, खून से मालूम चल जाएगा कि तूने नशे किए हैं कि नहीं किए हैं। प्रीमोजेम कितने हैं? बोला तो मुश्किल से 2-3 पोली पड़े होंगे मेरे पास। नहीं है मेरे पास, मैंने सारे उड़ा दिए हैं। मूड हो रहा है नीलू निकाल लूंगा। मूड हो रहा नीनो निकाल लूंगा। वाह, नाइस लॉजिक धीरज। प्रीमोज प्रीमोज नहीं है उसमें, सिर्फ 2 पुल हैं तुम्हारे लिमिटेड बैनर के, बाकी स्टैंडर्ड के 4 हैं। और बुक्स मोरा वगैरह और नेम प्लेट वगैरह है, अगर तू उसकी बात कर रहा है, वो जो ट्री की है तो। बाकी क्वेस्ट में अच्छे खासे प्रीमोज है तुम्हारे। जो क्वेस्ट है ना तुम्हारा नए एरिया रिलेटेड, उसमें प्रीमोज अच्छे खासे हैं। Shower me with praise. Time to shine. Clouds high. The birds. भाई मेरे को कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? Bow your head. Yoo-hoo! Fuck. $150 विजिट सेव्ड। वैसे न्यू एरिया 28% एक्सप्लोरेशन ना नहीं कर रहा बिकॉज 73 पिटी है, वेपन चाहिए नहीं। नीलू पहले निकालूंगा, फीमेल्स ओनली खेल रहा हूँ। फीमेल्स तो अर्ली चिनो भी है, अर्ली चिनो नहीं निकालेगा तो स्वरा। हेलो भाई, हेलो ग्रैंड एक्स, वेलकम टू द स्ट्रीम। टुडे इज माय बर्थडे। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू ग्रैंड एक्स। 3 दिन छुट्टी थी, अगर उन 3 Melusines दिनों are में beautiful मैंने creatures. जेंसिन एक्सप्लोर They करी are तो the होगी, तो अभी pride of तक 40 Fontaine. पुल्स आराम से होते। Be sure to befriend them and cause them no harm. 3 दिन में 40 पुल कैसे कलेक्ट करता है तू सौर्य? ड्रैकुला नहीं हूँ जन्म। वैसे ग्रैंडेक्स बर्थडे पार्टी कहाँ रख रहे हो, ये बताओ। हम लोग को इनविटेशन दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्यूटीज ओनली 2। अरे तो अर्ली चिनो क्यूटी नहीं है तुम्हारे लिए सौर्य? कैसी बात कर रहे हो तुम हैं? मतलब ऐसा करोगे तुम अर्ली चिनो के लिए? 3 दिन में लक्ष्मी चिट फंड से 40 पुल। वो 3 दिन में 3 बार स्वाइप करता अपना कार्ड और 40 पुल आ जाते हैं उसके। धीरज पता है भाई, 12-16 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम है आजकल। लेकिन वो तेरा एचएसआर में है ना, जेंसिन में नहीं है ना। जेंसिन तू खोलेगा तो 2 घंटे बाद बंद कर देगा, समझ रहा है सौर्या? तो ऐसा Water नहीं comes है in many flavors to the discerning palate. कि 3 दिन में तो 40 Mondstadt's पुल water कर is लिया होता। crisp and pure, while water from Liyue has... भाई ये बहुत बोलता है भाई, जिन्यूलेट कसम से बहुत बोलता है। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है, एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। 12 घंटे तो मेरा सोने का टाइम है। तुम कहाँ कंपैरिजन कर रहे हो धीरज है?
तो तुम्हारे लिए 24 घंटे होते ही नहीं है धीरज, पता है? तुम्हारे लिए 42 घंटे होते एक दिन में। 24 हम जैसे नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं दिन में। कितने घंटे स्ट्रीम करोगे? लगा लो 11:30 12 बजे तक। कितना टाइम हो जाता है तुम फ्रैगर? 11:30 12 बजे तक करूंगा स्ट्रीम में। हेलो सयान, वेलकम टू द स्ट्रीम। वहाँ कल संडे है इसलिए भाई, संडे के दिन भी लोगों को काम रहता है, ऐसा थोड़ी है धीरज कि फ्री रहता है हर आदमी। मॉन्स्टर 20% बचा है, हुआ है, बाकी मैप अनएक्सप्लोर्ड है। फिर भी तू पता है सौर्या, 40 पुल नहीं कर पाता। आई मीन अगर 12 14 खेल रहा है तो हो जाएंगे। 12 14 घंटे नहीं खेल रहा है डेली जेनसन में, तो फिर नहीं हो पाएंगे तेरे 40 पुल। फिर भी मुश्किल से 30 हो पाएंगे। और वो तेरे को अभी एचएसआर में नया नया चस्का है ना, इसलिए तू कर रहा है, तो वो खेल रहा है, तो तेरे को इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। जेनसन में नहीं कर पाएगा। जेनसन में एक बार पूरा स्टोरी वगैरह हो गया और मन नहीं लग रहा है ना खुद से, तो खुद से ही खोलेगा ना, तो 2 घंटे बाद बंद कर देगा तू। इतना मन नहीं लगेगा तेरा। न्यूबलेटिव प्री फार्म गाइड बताओ। न्यूबलेटिव प्री फार्म में क्या गाइड चाहिए? बॉस फार्म कर ले, मटेरियल फार्म कर ले, सब तो अवेलेबल है। पहले न्यूबलेटिव जब रिलीज होने वाला था उस टाइम नहीं था, अभी सब अवेलेबल है, तो प्री फार्म कर सकता है सैन। उसमें गाइड की क्या जरूरत है? गाइड जरूरत ही नहीं है। मैं तेरे को बोलूँ मैं बोलूंगा अंडर वाटर एनिमीज का ज्यादा फार्मिंग करना, क्योंकि वो कम पड़ जाएंगे तेरे को। एक सेकंड देना गाइस, मैं एक सेकंड आ रहा। गाइस मैं यूं गया और यूं आया, ठीक है? कहीं जाना मत, तुम लोग बैठो चिल मारो, मैं एक सेकंड में आया।
चलो गाइज बी बी आई एम बैक। एक सेकंड रुको। कहाँ से चैट मिस हुई है वो देखना था मुझे। पेनाकोनी पहुंच गया इतना जल्दी? या तो 12-14 घंटे खेलेगा डेली तो पहुंच ही जाएगा भाई पेनाकोनी। कौन सी बड़ी बात है? और स्किप स्किप बटन है वहां पे, यहाँ पे थोड़ी है स्किप बटन है जेंसिन में कि टाइम लगेगा तेरे को। हेलो स्काई, वेलकम टू द स्ट्रीम। मी मॉन्स्टर कैसे मारूं वो बताओ, वो पहली बार मिलता है। मी मॉन्स्टर के लिए तेरे को डीओटी टीम चाहिए सौर्य, बिना डीओटी टीम के नहीं मार पाएगा तू। या तो एओई कैरेक्टर चाहिए तेरे को, क्योंकि उसकी हेल्थ बार बहुत ज्यादा है, प्लस वो कैरेक्टर कैप्चर करता है। हेलो हेलो प्लेयर जी3, वेलकम टू द स्ट्रीम। जब ब्लैक स्वान बचाने आती है उस टाइम यूं यूं गया यूं आया, गॉट डिलेड बाय अप्रोक्सीमेट 3 मिनट्स। कुछ भी भाई, 3 मिनट भी नहीं लगे भाई मेरे को आके जाने में। ती, इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया भाई सौर्य ने मेरे ऊपर। गजब करता है सौर्य है। मतलब 3 मिनट भी नहीं लगे भाई मेरे को आके जाने में। एक सेकंड रुको गाइस। गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे रहे हैं। हरता ब्लैक स्वॉन चलेगी एओई डीओटी? हरता का क्या करेगा? हरता किसी काम की नहीं है। हरता आइस कैरेक्टर है, वो डीओटी थोड़ी लगाती है। ब्लैक स्वान से हो जाना चाहिए, ब्लैक स्वान अकेली काफी है वैसे तो वहां पे। बाकी काफका यूज कर सकता है, गुनाइफन इस्तेमाल कर सकता है, बहुत सारे कैरेक्टर है डीओटी वाले जिनको इस्तेमाल कर सकता है। सैम्पो इस्तेमाल कर सकता है। तेरे को बस ये चाहिए कि एओई अटैक करे या तो डीओटी मारे, क्योंकि वो साइड वाले कैरेक्टर जब कैप्चर करेंगे ना तेरे को तुरंत उनको वापस रिलीज करना होगा। नहीं करेगा तो फिर वो चारों के चारों को कैप्चर कर लेगा और फिर तेरे को मार डालेगा, तो इसलिए तेरे को वहां पे चाहिए। प्लस डीपीएस तेरा खत्म हो जाएगा वहां पे जब कैप्चर कर लेगा वो। तो अनोइंग है आई नो मीम वाला मॉन्स्टर, बट ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है मार पाना। लाइक एटलीस्ट स्टोरी में तो इजी है, वहां पे डिफिकल्ट है जब तुम लाइक ओवरवर्ल्ड तुमको जब मिलता है तो, जब लड़ना पड़ता है तो। चलो लेट्स सी। कमीशन कलेक्ट कर लिया था Add क्या मैंने? astra. हाँ कमीशन कर लिया था मैंने, सिर्फ एक्सप्लोरेशन वापस भेजना बाकी था। हम्म, आ जाओ पहले वो कर लेते हैं अपन, क्या कहते हैं, डोमेन फार्मिंग कर लेते हैं यू नो। अभी मैं क्या कहते हैं ये, इसका क्या नाम है, क्रिम्सन विच फार्म कर रहा हूँ ताकि हूताओ को बिल्ड कर सकूँ, हूताओ पे आर्टिफैक्ट लगाने के लिए वापस से। तो अभी अभी क्रिम्सन विच फार्मिंग चल रही है। मेरे को बीच में पता है तीन चार अच्छे अच्छे पीसेस मिले थे, बट पता जब रोल करने बैठा तो सबने हागा है मिलके एक लाइन से। Gather! Strike a pose. The tides beckon. Settle down. ये क्या कहते हैं, न्यूब्लेड के साथ कुछ ग्लिच चल रहा है क्या? क्योंकि पहले पता है न्यूब्लेड के पीछे भी उसके पता बॉल्स गिरते थे ना, इन केस अगर अल्टीमेट मार रहे हो, स्किल मार रहे हो तो न्यूब्लेड कैप्चर कर लेता था एज लॉन्ग एज न्यूब्लेड के लाइक आसपास में है वो बॉल्स। आजकल क्या हो रहा है पता है, जो बॉल्स पता है न्यूब्लेड के पीछे पड़ी रहती है ना, जिसकी तरफ न्यूब्लेड फेस नहीं किया होता उसको वो एब्जॉर्ब ही नहीं करता है। उल्टा वो पता है नॉर्मली चार्ज करने लगता है अपना क्या कहते हैं, चार्ज अटैक के लिए न्यूब्लेड। जब तक तुम अपना कैमरा एंगल उन बॉल्स पे नहीं ले जाओगे ना तब तक वो उनको कैप्चर नहीं करता है न्यूब्लेड आजकल। तो आई हैव अ फीलिंग कि न्यूब्लेड के साथ ये ग्लिच चल रहा है कुछ तो, क्योंकि पहले पहले ये सब प्रॉब्लम नहीं आती थी न्यूब्लेड को। ट्रायल ब्लेज, ब्लैक स्वान, बायलू, नताशा यूज करो।
डबल हीलर की जरूरत नहीं है, एक हीलर काफी है। एक वो ले जा, क्या कहते हैं, सील्डर करेक्टर ले जा जो तेरे को मतलब सस्टेन करने में हेल्प कर सके थोड़ा। तो तेरे को रादर देन पता है 2 हीलर यू नीड एक, क्या कहते हैं, ऐसा करेक्टर जो लाइक तेरे को डैमेज होने से बचा सके और दूसरा तेरे को हील कर सके। बस ये 2 करेक्टर चाहिए। आई थिंक बाइलू विद एनी सील्डर Solidify. तुम्हारा वर्क कर जाएगा। One with nature, as one with wind and cloud. Bow your head. Be हेलो सागा, sanctified. वेलकम टू द स्ट्रीम। ये देखो, अभी अभी देखो, ये खुद से चार्ज कर रहा है। वो देखो बॉल वहां पड़ी थी उसकी तरफ, ये कैमरा उसने पिकअप कर लिया न्यूब्लेड ने। देखा तुमने मैं क्या बोल रहा था कि न्यूब्लेड के साथ क्या ग्लिच चल रहा है अभी। लेकिन पहले 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 ये सब प्रॉब्लम नहीं आती थी। अगर फील्ड पे तुम्हारी बॉल्स पड़ी है ना तो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता था न्यूब्लेड। जस्ट लाइक तुम्हारी, क्या कहते हैं, ये जैसे तुम्हारी सार्ड्स पिकअप कर लेती है। नाम क्या था उसका, नाम भूल गया मैं। नाम भूल गया मैं, क्या था उसका। हेलो सागा, वेलकम टू द स्ट्रीम। तुझे भाई हमारा भी थोड़ा बिल्ड चेक कर दो। हम अभी किसी का किए नहीं। रोहित राज तुम्हारा कहाँ से करते हैं हम। किसी का नहीं किया अभी तक मैंने। बाइलो और मार्च चलेगी 10। हाँ, बाइलो विथ मार्च यूज कर ले, बेटर है। सॉरी, तेरे को एक चीज और बता दूं, वो मीम जो है ना, जब उसका, क्या कहते हैं, पंख वो चार्ज करना चालू करता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना सौर्य, कि वो जो पहले 2 कैरेक्टर जिन पे तू जिनसे तू नॉर्मल अटैक या फिर, क्या कहते हैं, अल्टीमेट इस्तेमाल करेगा ना, उनको वो मार्क करके उनको कैप्चर करेगा वो। तो ऐसे लाइक हीलर या फिर अपने सपोर्ट कैरेक्टर के ऊपर लेना वो, जब क्या कहते हैं, एग्रो, जब भी वो चार्ज करना चालू करे सॉरी, तो तू उसको फिर आराम से डिफीट कर पाएगा मीम मॉन्स्टर को। तुझे भाई राम राम, कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हाल चाल है जाट, तुम्हारे कैसे हाल चाल है भाई? कचिंग के लिए वेपन बताओ। कचिंग के लिए तुम्हारा लायंस रॉर है ना सागा, लायंस रॉर चला सकते हो, या फिर तुम, क्या कहते हैं, ब्लैक क्लिप शॉट ले सकते हो। तुम्हारे पास चॉइसेस हैं, ऐसा नहीं है कि चॉइसेस नहीं है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि फ्री टू प्ले में ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। तुमको मेजरली या तो स्टोर से पिकअप करना पड़ेगा या तो तेरे को बैटल पास से लेना पड़ेगा। हेलो अननोन, वेलकम टू द स्ट्रीम। मैं भी यार डोमेन फार्म करने, मैं भी आ रहा है डोमेन फार्म करने। मैं भी आता है यार डोमेन फार्म करने। अब क्या फायदा, अब तो मैं क्लियर कर लूंगा डोमेन। अब क्या फायदा सॉरी आके। Gather. Silence. Fallen leaves, adorn my night. Let the mighty be humbled. Solidify. सुजा भाई मैं भी बढ़िया हूँ, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है? बेटर है क्या नहीं पहले से? बेटर है मेरी तो, बस खांसी है, बोला तो था तेरे को, सिर्फ खांसी चल रही है, वो ठीक हो जाएगी, उसकी दिक्कत नहीं है। सुजा भाई कब करोगे रिव्यू? 30 लाइक्स के बाद करेंगे ना रोहित राज हम लोग रिव्यू। मैं वेट कर रहा हूँ, 30 लाइक्स होंगे तो जरूर कर दूंगा मैं लोगों का रिव्यू। 30 लाइक्स कंप्लीट करवा दो उन लोगों से बोल के। मैं तो आरटी के लिए आऊंगा ना, क्लियर आप ही करोगे। कितना चालाक है सौर्य है, बोल रहा क्लियर आप ही करोगे। मैं तो आरटी के लिए आ रहा हूँ। Stabilize. Yoo-hoo! Bow your head. Be sanctified.
Settle down. द ब्लैक स्वॉर्ड है बीपी वाली, सही है ना? ब्लैक स्वॉर्ड देखनी पड़ेगी। अच्छा ब्लैक स्वॉर्ड है, हाँ वो अच्छी है, अच्छी। मैं एक्चुअली उसको चलाया हूँ, उसमें हीलिंग भी है तुम्हारी, तुम्हारे क्या कहते हैं, आई थिंक चार्ज अटैक परसेंटेज पे या डैमेज परसेंटेज पे अच्छी है। क्योंकि ब्लैक क्लिप के साथ तुमको एनिमी डिफीट करना पड़ता है, उसके साथ ऐसा नहीं है। उसके साथ तुम्हारा फ्लैट 20% मिलता है, विथ आई थिंक हीलिंग मिलती है तुमको सर्टेन परसेंटेज। अच्छी स्वॉर्ड है ब्लैक वाली। बट पता है टू बी ऑनेस्ट सागा, वो डीपीएस पता है उस ब्लैक वाली स्वॉर्ड में उतना अच्छा नहीं है, ट्रस्ट मी। तभी मैंने पता है ये आयाका का वेपन निकाला था कि कचिंग पे चलाऊंगा मैं करके, क्योंकि डैमेज गैप ना और डैमेज डिफरेंस बहुत मैसिव है ब्लैक सॉर्ड और तुम्हारी ये वाली सॉर्ड, इवन ब्लैक क्लिप सॉर्ड और उसके बीच में ना बहुत मैसिव डिफरेंस, 5 स्टार वेपन और इसके बीच में डिफरेंस। तो या तो रुक ले और सेव करके बाद में निकाल लेना, ठीक है? नहीं तो क्या कहते हैं, चला ले तू, क्या दिक्कत है? वैसे भी तूने बीपी वेपन ले रखा है तो चला सकता है। सुजा भाई मेरे को मिस नहीं किया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं किया जाट, मिस कैसे करूंगा? तुमने डिस्कॉर्ड में जो हमारा दिमाग खा रखा है। सुजा भाई मेरे को आपकी बहुत टेंशन है जब से पता चला कि आपकी तबीयत खराब है। डीपीएस बनाने की सोचा था, की सोच रहा था। गलत सोच है ना सागा, डीपीएस बना तो लोगे कचिंग को बट यूज नहीं करोगे तुम, क्योंकि उसका डीपीएस उतना खास नहीं है विद 4 स्टार सॉर्ड्स। Let my name echo in song! Clouds high. The birds. तो मिनिमम तुमको क्या कहते हैं 5 स्टार चाहिए ही चाहिए है डीपीएस बनाने के लिए। नहीं तो एग्रावेट कचिंग चलाओ, एग्रावेट ज़्यादा बेटर है। डीपीएस उतना खास नहीं है कचिंग का, ट्रस्ट मी। Silence. अभी ये चला लेता हूँ, जब बैनर आएगा तब पुल मार लूंगा वेपन के लिए। हाँ ये कर लेना। हाय प्लेयर G3, वेलकम टू द स्ट्रीम अगेन। मैं आप आता खाना खा के खाना बनाने के बाद, खाना बनाने जा रहा है कि खाने जा रहा है? सॉरी पहले ये बता मुझे। I see the value in my own है? work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. I believe I will continue. गाइस लाइक कर देना जिन्होंने लाइक नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब जितने स्ट्रीम पे नए हैं। अरे यार ये ऑपीस देता रहता है साला। ऑपीस में पता है अच्छे अच्छे पीसेस मिले हैं मेरे को, ऑन सेट में एक भी ढंग का नहीं मिला आज, एक भी नहीं मिला जिस पे लाइक मैं रिस्क ले सकूं मैं। ठीक है सुजा भाई, मतलब मैं आपका दिमाग खाया, मतलब मेरी केयर की कोई रिस्पेक्ट ही नहीं करता। ठीक है अब मैं आपका दिमाग खाया ना आएगा से कभी नहीं खाऊंगा। अरे 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 इमोशनल अत्याचार करने की कोशिश करते हो हैं जाट हम पे? ऐसे थोड़ी काम चलेगा जाट। हम पे ये सब टैक्टिक इस्तेमाल करके कोई फायदा नहीं है जाट। मेरे पास सिर्फ राइडन है डीपीएस के लिए, स्पाइरल में बड़े दिक्कत होती है दूसरे टीम के लिए। देख कचिंग से तू क्लियर तो कर लेगा, लेकिन आई कांट गारंटी तेरा क्या कहते हैं कि 36 स्टार होगा कि नहीं होगा सागा, समझ में आ रहा है? क्लियर तो तू कर लेगा स्पाइरल, ऐसा नहीं है कि स्पाइरल क्लियर नहीं कर पाएगा, स्पाइरल क्लियर कर लेगा तू। बट प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं कहा जा सकता कि तेरा 36 स्टार होगा कि नहीं होगा। रॉयल एस गेमिंग को जानते हो? नहीं। किसी कैरेक्टर के लिए फार्म कर रहे हो? मैं उसके लिए क्या कहते हैं हुताओ को फाइनली बिल्ड करने के लिए फार्मिंग कर रहा हूँ, क्योंकि अभी और कोई कैरेक्टर के लिए फार्मिंग मतलब प्लान नहीं है, तो अभी इसलिए हुताओ के लिए फार्मिंग कर रहा हूँ कि हुताओ पे आर्टिफैक्ट लग जाएंगे फाइनली, क्योंकि बहुत टाइम से बेंच होकर बैठी है हुताओ, तो उसके लिए फार्म कर रहा हूँ। बट क्रिम्सन विच में मिलने का नाम ही नहीं ले रहा आर्टिफैक्ट। दूसरा डीपीएस किसे बनाओ? दूसरे और कौन से ऑप्शन है तुम्हारे पास डीपीएस में? अरे वैसे सागा तुम्हारे पास वो होगी ना, कुकी तो होगी, कुकी है कि नहीं है?
अरे 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 जाट, कहाँ जा रहे हो? रुको जरा, बैठो तो सही। पानी वानी पी के जाओ, खाना आना खा के जाओ, ऐसे थोड़ी ऐसे खाली हाथ जाओगे क्या जाट? कुकी देख, कुकी जो हाइपर ब्लूम है ना, वो इवन तेरे क्या कहते हैं कचिंग एग्रावेट जो फोस्टर वेपन वाली है उससे बेटर है। तो कुकी चला ले, कुकी कुकी ज्यादा बेटर है तेरे को। कचिंग पे अभी फायदा नहीं है मेहनत करके। ट्रिपल क्राउन हर। नो, आई एम नॉट डूइंग ट्रिपल क्राउनिंग। सुजय भाई, आज के बाद मैं आपकी कभी नहीं दिखूंगा डिस्कॉर्ड पर। जा रहा हमेशा के लिए मैं केयर की कोई टेंशन ही नहीं है। अरे अरे अरे, बुरा मान गए जाट साहब है। नहीं नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। और कोई तो होगा डीपीएस में सागा। ऐसा थोड़ी है कि राइडन अकेली डीपीएस है। तुमने आयाका निकाली थी, आयाका का क्या हुआ? मुझे याद है मैंने तेरी आयाका निकाली थी सागा। आयाका का क्या हाल चाल है? उस वो तो है तेरे पर डीपीएस में, फिर अभी क्यों बिल्ड कर रहा है? एक तो राइडन नेसल है, दूसरा हाइपर ब्लूम सोच रहा नहीडा के साथ। कचिंग फुलियम बिल्ड करके कर सकता है, मेरे को लगता है। कचिंग फुलियम कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुकी के साथ फायदा ये है कि कुकी पे ना तुम्हारा हीलिंग मिलती है ईएम के बेसिस पे, और एचपी पे भी हीलिंग है कुकी की। तो दैट्स वाई कुकी बेटर है वहां पे तुम्हारी। कचिंग हीलिंग नहीं प्रोवाइड कर पाएगी, बट तेरे को ये है कि डीपीएस हो जाएगा कचिंग से। बट वो भी है, तेरे कचिंग पे अगर कॉन्स्टलेशन नहीं है ना, तो इलेक्ट्रो इन्फ्यूजन टाइम तेरा बहुत कम रहेगा कचिंग का फील्ड पे। दैट इज अनदर प्रॉब्लम। तेरी कुकी जो है ऑफ फील्ड इन्फ्यूजन देती है। अरे आय का बेचारे तो अटक गए हैं। अटक गए मतलब उसके आर्टिफैक्ट प्लस टैलेंट लेवल अब कम है, तो उस पे फोकस करना आयाका पे सागा। आयाका पे फोकस नहीं करेगा तो आर्टिफैक्ट और टैलेंट लेवल अप कैसे होगा आयाका का? अजडा से फाइट नहीं हो पा रही बिना सील्डर के। देखो, बिना सील्डर के हीलर बस तुम कर सकते हो अजडा से फाइट, बट उसके लिए बहुत कांस्टेंट हीलिंग चाहिए है। बस ये है कि सील्डर के केस में तुमको डीबफ नहीं लगता है ना, तुम्हारी हेल्थ नहीं जाती है, तो इजी पड़ जाता है। तो जब भाई अब खाना क्यों खाऊं? अब आप बोल दिए, मैं आपके दिमाग खा रहा हूँ। अब क्या ही करूंगा वाईटी और डिस्कॉर्ड पर रह के। सही बात है जाट, सही बात है। कोई नहीं, आज उपवास कर लो तुम जाट, एक काम करो, आज तुम उपवास कर लो। आपकी तबीयत के चक्कर में नींद भी नहीं आई? अच्छा। अच्छा जाट, इतना झूठ क्यों बोलते हो? देख रहे हो गाइस? और अभी पता है ये भी चल रहा है, तेरा मास्टरी चल रहा है, तो टैलेंट अप मटेरियल तो इजीली फार्म कर सकता है। आ जाओ गाइस, ये करते हैं, हमारा ये बचा हुआ है। इवेंट बचाओ, इवेंट कर लेते हैं। अरे वो स्टोरी में अटका होगा अननोन, स्टोरी थोड़ी कर पाएगा कोऑप में। स्टोरी तो सोलो में ही करनी पड़ती है, बट उसमें जोंगली देता है तुमको, ये भी बात है। आयाका की टीम बताओ। आयाका में एक एक तुम्हारा क्या कहते हैं हाइड्रो अप्लायर रहेगा, एक तुम्हारा क्या कहते हैं भीवी सेट के साथ रहेगा सीसी यूनिट, और चौथा तुम्हारा सील्डर रख सकते हो, नहीं तो अनदर क्या कहते हैं क्या कहते हैं क्रायो रेजोनेंस कैरेक्टर रख सकते हो, नहीं तो तुम क्या कहते हैं एक वो रख सकते हो तुम्हारा एक और हाइड्रो अप्लायर कैरेक्टर, ताकि तुम्हारा एप्लीकेशन टाइम थोड़ा 100% रहे फील्ड में आयाका के लिए। तो यूजुअली यही टीम रहती है सागा तुम्हारी आयाका की। सच बोल रहा हूँ सुजा भाई, मेरे को सच में नींद नहीं आई है थी। प्रूफ दिखाओ हमें जरा, आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिखाओ अपने जाट, ऐसे थोड़ी हम मान लेंगे। मेरे मोबाइल की कसम सुजा भाई, हम ऐसे झूठे कसमें नहीं लेते हैं किसी से जाट, ठीक है? हम नहीं मानते कि तुमको नींद नहीं आई है। हमको पहले डार्क सर्कल की फोटो भेजो अपने। मैंने तो ट्रैवलर से राइडन को बीट किया था। स्टोरी में लियुए इज इजी कंपेयर टू इनाजुमा।
तो उसको उसका स्किल इशू हो रहा है अननोन, क्या कर सकते हैं। वैसे जोंगली देते हैं वो लोग, तो आई डोंट थिंक सो स्टोरी में अटकना चाहिए तुमको। सील्डर ऑलरेडी रहता है तुम्हारे पास स्टोरी में, स्टोरी का टाइम। The mystifying Megachurul has come up with a way to summon the wind and generate large wind currents in the domain. When it generates wind currents, use Shockwave from plunge attack to more easily defeat the Megachurul. Stabilize. Settle down. Silence. Gather. Shower me with pain! Wind Strider. Bow your head. सच बोल रहा सुजा भाई, मेरे को सच में नींद नहीं आई है। मैं एक सेकंड, चैट कहाँ से लोड नहीं हुई है, चैट लोड नहीं हो रही है, चैट नहीं किया हो तुम लोग अभी तक। ठीक है सुजो भाई, इतनी बेइज्जती में अब आपके सबूत भी चाहिए। ठीक है, मेरे पर ट्रस्ट ना है, बस ये लास्ट चैट है, इसके बाद मेरी कोई चैट दिखेगी कभी भी डीसी पर मैसेज नहीं दिखेगा। डराते हो हैं जाट, गलत बात है ये जाट, डराने की कोशिश करते हो हैं हमें। शर्म नहीं आती तुमको थोड़ी सी भी है? दिख नहीं रहा सामने वाले की तबीयत खराब है और उसको ऐसे डरा रहे हो तुम, है बुरी तबीयत होने के बावजूद। Solidify. Be sanctified. Gather. Strike a pose! बहुत टैंक किए बे Silence. हैं? Settle down. Let the mighty be humbled. Stabilize. फ्रूट से मारो, इजी है। अरे वो फ्रूट सम्मन तो करे, फ्रूट पहली बार में बस सबमिट किया, दूसरी दूसरी बार में उसने क्या कहते हैं स्लिपरी वाला क्या कहते हैं सेंसिटिया सम्मन किया,
तीसरी बार में उसने क्या कहते हैं विंड करंट डाला, चौथी बार भी विंड करंट डाला उसने सागा। बिना फ्रूट के संबंध हुए मैं कैसे मारूंगा उसको। चलो इवेंट फाइनली खत्म हो गया। इवेंट मेरे को लग रहा था इवेंट रह जाएगा, पता है मैं ऑलमोस्ट भूल गया था कि इवेंट मेरा बचा हुआ है करके। लेट्स सी हमारा कितने दिन है बैनर में अभी। 2 दिन 15 घंटे हैं अभी बैनर में हमारे टोटल। एक सेकंड, कमीशन मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे अभी तक। दो भैंस की आंख मैंने ऑलमोस्ट रह गया था कमीशन मेरा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे 3-4 दिन से फैमिली वाले बाहर गए हुए हैं ना, मेरे को अकेला हूँ तो 3-4 दिन से खाना बना रहा हूँ मैं। तो इतनी देर बाद रिप्लाई कर रहा है सौर्या इस चीज का। मैंने कब पूछा था ये चीज सौर्या, अभी रिप्लाई कर रहा है तो हमें मुझे। Thank you for सेना का बर्थडे है। क्या ही करूं भाई, मैं तो तब किचन में था, क्या ही करूं। जूस का अभी रिप्लाई कर रहा है, कब की बात है, कब कब बोला था मैंने। सियानुन को वो करते हैं, चलो क्वेस्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि रखा डला हुआ है, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। सियानुन का क्वेस्ट करते हैं हम लोग चल के। We've been to so many places lately. What do you say we take a day off from adventuring and just find somewhere nice to relax? Let Paimon think. Where are some nice places we could go? Oh, why don't we pay Cloud Retainer a visit at Mount Outsong? It's been a while since we last saw that illuminated bird. She's always the one popping up out of nowhere and scaring us half to death. So let's surprise her this time. जाट सच में चला गया क्या? हेलो जाट, सच में चला गया क्या जाट? लग रहा सच में चला गया है भाई जाट। हम तो मजे कर रहे थे जाट के साथ। Here we are, right outside our place. Do you still remember the first time we came here? We even brought offerings and everything. गुस्सा हो गया ज्यादा। हाँ गुस्सा हो गया बंदा। हेलो अमन, वेलकम टू द स्ट्रीम। And when we told her that Rex Lapis had been assassinated, she immediately threatened to squash Liyue Harbor. Paimon thought she'd be impossible to get along with. But now that we've spent some more time together, she's really और not सुझाव like that at all. बस बढ़िया है, तुम बताओ जस्ट अमन, तुम्हारे कैसे हालचाल है? We probably don't need to bring any offerings now that we've gotten to know her pretty well, right? Membership Still, कब? Paimon's got some snacks around here somewhere, so if she really wants something, we can just use that. मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा अमन तेरे को मेंबरशिप तो खुद से लेनी पड़ेगी ना। मैं थोड़ी ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं रैंडम मेंबरशिप दे सकता हूँ किसी को, बट ट्रांसफर किसी स्पेसिफिक बंदे को नहीं होती मेंबरशिप, पॉसिबल ही नहीं है। Huh? वो खुद से लेनी Did पड़ती है। something catch your eye? Don't think we ever seen her before. Oh, what a pretty lady. Is she also here to visit Cloud Retainer? It seems like she could also be a powerful adapter. Yeah, you're right.
All it takes is one look and you can tell she's someone special. As expected of that bird lady, really. She must have a whole bunch of Adepti friends from all over the country. Okay, but if we're both friends of Cloud Retainer, then we're basically friends by association, right? Want to go up to her and say hello? लमाओ हो गया मेरे साथ भाई। अमन मैंने तेरे को पहले ही बोला था ये चीज कि भाई मेंबरशिप में ट्रांसफर कर ही नहीं सकता, वो खुद से लेनी पड़ती है, ट्रांसफर थोड़ी होती है मेंबरशिप। अब इस कर दो फिर। अमन तूने ये बता पहले मेरे को लास्ट वीक जब सब करवा रहे थे तब मेरे को क्यों नहीं बोला? अभी तक मैं कर दिया होता तेरा अबिस, पता है 3-4 बंदों का ऑफ स्ट्रीम बैठ के किया था मैं अबिस। तेरा तेरा भी अभी तक मैं कर दिया होता अबिस, तूने मेरे को बोला काहे क्यों नहीं पहले, ये बता। Helping you make more connections is a part of Paimon's job as a reliable guide. Paimon's got this. Hello. ऑफ स्ट्रीम ही कर देना सुजा भाई। हाँ कर दूंगा, लेकिन तेरे को अमन क्लियर करके देना पड़ेगा। मतलब जौन सा फ्लोर करवाना है ना वो उसके उसके एक फ्लोर पहले तक मुझे क्लियर करके देना, तभी करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा मैं तो मैं तो C2 ही खुश हूँ। है क्या? अच्छा, फ्लोर 11 चेम्बर 2 करके ही खुश हूँ। अच्छा ऐसा सो रहा है। जो भी तेरे को करवाना है ना मन, उसके एक पहले तक कर देना ताकि फिर मैं ट्राई कर सकूं। यो सनी, वेलकम टू द स्ट्रीम। आई एम गुड सनी, तुम्हारे कैसे हाल चाल है सनी? और यार मीको निकली कि नहीं निकली सनी? Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Paimon doesn't think we've met, but we're also friends of Cloud Retainer. May we have the pleasure of learning your name, Madam Adeptus? You two... What is this tomfoolery? Has this shift in form so clouded your eyes that you no longer recognize one anymore? Wait, you're... Huh? You're the illuminated bird? But you look... human! How did that happen? Oh, donning human form is scarcely any test of one's abilities. As for your confusion, one merely had no reason to indulge such inclinations before. So, you're indulging now because? Well, one has made plans to pay a visit to some disciples at Liyue Harbor. Taking on a human form for such a trip is simply a way to make matters less conspicuous. 112 फ्लोर कर लिया तूने सौर्या। निकाल सकता हूँ इजीली पर टाइम नहीं है, कॉज बोर्ड एग्जाम है मेरा। फाउंटेन, सुमेरु, इकोनॉमिया सब 0% एक्सप्लोर्ड है। 0 नहीं, 15 to 20%। हाँ अच्छा, हाँ भूल गया था मैं सनी तेरा कि तेरे एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम है, इसलिए नहीं कर रहा तू। यार मी को है तेरे सामने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तेरे को स्किप करना पड़ रहा है और 2 ही दिन बचे हैं। कोई नहीं सनी, वापस से आ जाएगी, लेकिन अभी अब 4-5 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे आईमीको को वापस आने में, सैडली। You? Worrying about keeping a low profile? You're the one who likes to pop up out of nowhere all over the place. In fact, Paimon can think of several examples. Like last year, when you suddenly appeared on the top of a roof without any warning. Or... I almost forgot, Paimon brought you some gifts. Hey! Didn't we agree not to bring that up unless she asked? Oh? So you have taken care to follow the proper rules of etiquette after all. Most commendable. Well, this is all Paimon's got. You don't mind, right? कोई नहीं, आपसे वेल्किन खरीद लूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम तो पक्का निकाल लूंगा। भाई ये लावा वॉकर सेट पे कितने अच्छे सेट स्टैट्स मिल रहे मुझे।
यही होता है सॉरी, यही होता है। इसलिए तो हम क्या कहते हैं, इसलिए तो हम हुताओं के लिए फार्मिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी फ्री है तो हम बोले कि ठीक है, अभी रेजेंट कहीं डंप करने है तो कहीं ना कहीं तो डालूं। तो बोला इसी सेट पर डाल लेते हैं हम लोग। और अभी भी कुछ नहीं दे रहा है मुझे। लेकिन स्ट्रॉन्ग बॉक्स ज़्यादा बेटर, अच्छा ऑप्शन है। पता है, अगर तुम दूसरे सेट को फार्म करने जाते हो तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स बेटर ऑप्शन है। सुझा भाई एक्स्ट्रा पैसे चाहिए चले गए, 80 रुपए का साउट आउट तो दे दो। अरे अमन, साउट आउट टू यू। खुश। गलत साइड पे मस्त सब्स। अब तो सुझा भाई की हूता शोकेस भाई, मेरी कहीं की हूता शोकेस भाई। उसको मैं आर्टिफैक्ट पहना के एक बार साइड में रख दूंगा ना, वो फिर रखी रहेगी। मैं उसको वापस छूने नहीं वाला हूताओ का। वो तो 90 लेवल है, इसलिए मैं उसको आर्टिफैक्ट पकड़ा रहा हूँ अभी। नहीं तो इतनी इज्जत नहीं देता मैं भाई किसी को, सच्ची बता रहा हूँ। जस्ट बिकॉज सी इज 90 दैट्स व्हाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं तो नहीं करता मैं। T0 है मेरी हूताओ। One has never found oneself lacking in basic comforts. On the contrary, it is the gesture that one values above all else. So long as you've shown proper respect and consideration, the quantity or quality of the gift is but a trivial matter. That kinda makes Paimon feel a little guilty for trying to keep them for herself. Anyway, where were we before you reminded Paimon about the gifts? Cloudrider said that she is going to visit some of her disciples. Right. So by disciples, you must mean Ganyu and Shenhe. It's also been a while since we last saw them. Maybe we can... One planned to extend the invitation even if you had not raised the matter yourself. Shenhe and Ganyu should be quite pleased to see you again. मेरा बाइजू कभी काम आएगा इस जिंदगी में? आएगा ना सागा, तुमको ढूंढना पड़ेगा उसके लिए कि हम बाइजू को कैसे काम में लगाएं। नो प्रॉब्लम सुजा भाई, हूताओ हूताओ बन जाएगी अर्ली चिनो आने के बाद। वैसे नहीं पता है, मेरे हिसाब से ये अर्ली चिनो को बर्निंग रिएक्शन एंड बार्गन रिएक्शन रिलेटेड बनाने वाले हैं, क्योंकि ये लोग प्रॉपर पूरा सेट ही दे रहे हैं ना उस पैच में अर्ली चिनो के साथ। तो मोस्ट लाइकली हूताओ अपनी जगह फिर भी सही रहेगी, मुझे नहीं लगता है अर्ली चिनो रिप्लेस कर पाएगी हूताओ को। टीची एंड बाइजू डेड है मेरा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ डेड नहीं है सागा, ढूंढने से सब कुछ चल जाता है, सच्ची बता रहे हैं हम। भाई नया आर्कॉन कब आएगा? जब नया रीजन आएगा सागा। बाइजू आता है ना काम। बाइजू आता है ना काम एक्सपेडिशन में लगाने के लिए। नहीं नहीं, एक और चीज का काम आता है सनी। अगर तुमको डुकरों वाली खांसी सुननी है, या फिर तुमको ऐसा चाहिए कि मतलब ऐसा कैरेक्टर चाहिए जो कि मरने की हालत में रहे, तो बाइजू इज द बेस्ट ऑप्शन वहां पे। बर्निंग सेट तो मस्त, पर गान्यू मेल्ट विल बी ओपी विथ हंटर सेट वेपन, हंटर्स वेपन। ईएम सेंट्स पे सीडी सीआर एचपी परसेंटेज एचपी है, और एचपी सेंट्स पे ईआर सीआर डिफेंस ईएम। पता है ईएम सेंट्स तू हुताओ को लगाएगा भी नहीं, हुताओ पे अटैक या एचपी लगाएगा, ईएम उस पे लगाएगा, तू क्या कहते हैं डी लुक पे। हेलो अर्जुन, वेलकम टू द स्ट्रीम। नहीं भाई, यू कैन कीप हिम। अब बोरिंग हो रहा है थोड़ा जेंसिन फार्मिंग करने में। फार्मिंग तो ऐसी ही होती है सागा, ऐसी ही होती है फार्मिंग तो। However, one would first inquire as to the reason behind your visit here. You have cause to seek one's company? No reason in Yeah, particular. we just found ourselves missing you and wanted to see how you were doing. We were hoping you'd tell us one of your stories. Who knew we'd run into your human form while we were at it? भाई मैंने फाइनली फ्लोर 12 6 स्टार कर लिया। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन अर्जुन। आज पूरा दिन रोब्लॉक्स खेला। जेंसिन खेल लेता अमन, कुछ हो ही जाता तेरा। रोब्लॉक्स खेल रहा था। Is that so? वहां पे क्या कहते हैं, रोब्लॉक्स पे क्या कहते हैं, पे टू विन वाले प्लेयर बहुत मिलते होंगे, क्यों अमन? If there are no urgent matters at hand, then let us make haste for Liyue Harbor.
Ganyu is likely still working at UA High Pavilion, so that shall be our first stop. भाई अटैक सेंस अच्छा है शायद 44 डिफेंस 19 EM 20.2 CD एंड 209 HP। बट तेरे को अटैक नहीं एचपी चाहिए ना, क्योंकि एचपी से अटैक का ऑटोमेटिकली होता हुआ कन्वर्ट होता है। तो रैदर यू वांट एचपी मेन स्टैट एंड सब स्टैट में यू नो अटैक देन मेन सब स्टैट अटैक देन लाइक अगर तेरे ये फ्लैट एचपी की जगह एचपी परसेंटेज होता ना सॉरी तो बेटर होता अटैक पीस। बट हूताओं के लिए नहीं है, हूताओं के लिए एचपी मेन स्टैट चाहिए, या तो सब स्टैट में एचपी है तो फिर रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बाकी आर्टिफैक्ट्स में तेरा रोल नहीं होगा फिर एचपी का ना ढंग का। सॉरी बहुत रोबलॉक्स तो ऐसे स्पेंड करते हैं कि वही तो चक्कर है। वही तो बोल रहा था मन, तेरे को क्या मजा आया होगा जिस सामने मतलब लोगों के सामने जो स्पेंड करे होंगे पैसे अच्छे खासे तो रोबलॉक्स खेलने में। बट सम गेम्स डोंट फोकस ऑन रोबलॉक्स। Sounds great! Then let's all go. You promised my son free Roblox. Ganyu has been quite busy with work as of late. One can count on one talon the number of times she returns to Mount Outsong each year. Yeah, Sunny? Shujha has also secured employment. ये क्या है बे? वो वीडियो नहीं देखी क्या? नहीं सनी, कौन सी वाली वीडियो की बात कर रहा हो? मुझे तो पता भी नहीं है। One was so easily mollified. One shall ब्रा investigate 0 से 20 everything in रोल one's किया, own एक ही eyes बार and सारे decide रोल for फ्लैट डिफेंस oneself में if चला their गया। living conditions are satisfactory. नाइस सॉर रहा बोल रहा सारे के सारे रोल डिफेंस में चलेगा मेरे 20 0 से 20 जाने पे। We're almost at Way High Pavilion. Hey, do you think Ganyu will be shocked to see Cloud Retainer like this? मैं तो 18 प्लस गेम ढूंढने गया था रोब्लॉक्स में, पर मिला ही नहीं। गलत जगह गए थे ना, वहाँ वो बच्चों वाला गेम है, वहाँ थोड़ी 18 प्लस तुमको मिलेगा। अब तुमको क्या वो डब्बे डब्बियाँ बिना कपड़े के दिखा दे क्या अमन 18 प्लस करने के लिए? भेज दो सनी, हम बाद में देख लेंगे। Guess we have no idea if Shenhe and Ganyu have ever seen her in this form before. Wait, where did she go? She is back there. Why are you just standing there, Cloud Retainer? Quietly now. One shall stay here. You two can go and meet with her. But why? Isn't it better if we all go together? If one were to proudly proclaim one's presence, Ganyu would surely profess herself otherwise unoccupied and drop everything to attend to one's visit. One fears that would only result in her staying up all night to make up for lost time. डिफेंस परसेंटेज ऐड हुआ और उसके फिर उन्हीं दोनों में रोल हुए सारे। टूट गया मैं। सुजा भाई बायजू बन गया क्या? सुजा भाई बायजू बन गए क्या? हाँ अभी बायजू बने हुए हैं हम। कुछ दिन में हम फिर से बायजू से वापस हब में खुद में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपकी चीची कहाँ है? तू है ना? है तो चैट में, तू है तो। हेलो एरन, वेलकम टू द स्ट्रीम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, वैसे गुड इवनिंग होना चाहिए, गुड मॉर्निंग नहीं होता है इस टाइम पे। One does not wish to trouble her. Conversing vicariously via you two shall suffice. Do remember to inquire as to her recent well-being. Again, do not mention... Fair enough. Makes sense. Alright then, we'll just pass on your Cloud Retainer? Oh, busted. Is that lady someone you know, Ms. Ganyu? She is indeed. I'm sorry, Huixin, but could we delay the upcoming meeting for a little bit? Bang 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 I bang। believe my schedule today is quite full. Although, perhaps I could move some work to later in the evening. क्या लावा वॉकर सेंड्स पे एचपी में अटैक परसेंटेज सीआरसीडी है? कर दे रोल तो सॉरी,
क्या पता अच्छा रोल हो जाए तो फिर तो तू उसको ऑफ पीस लगा के बाकी सब ऑन ऑन पीस कर सकता है सौर्या। बिंग बैंग बोंग बिंग बिंग बैंग बो। ये क्या कर रहे हो बे चैट में? बिंग बिंग बोंग बोंग कर रहे हो तुम लोग चैट में बैठ के? बैंगिंग एयर राइट नाउ माय एज स्ट्रीक इज हाईएस्ट टुडे। है आज ग्रैनी मल्टीप्लेयर खेला रोब्लॉक्स में। रोब्लॉक्स में मत खेलना ग्रैनी मल्टीप्लेयर रमन। ग्रैनी गेम का क्रैक ढूंढ के उसमें मल्टीप्लेयर भी क्यों खेलेगा? सोलो खेल, तब तेरे को ज्यादा मजा आएगा अमन। ग्रैनी मल्टीप्लेयर कौन ही खेलता है? वापस से एचपी सैंड्स रिरोल किया, डिफेंस किया है। देख रहे हैं कैसे रोल मिलता? देखते हैं कैसा रोल मिलता है। रीरोल थोड़ी होता है कोई पीस तुम्हारा सौर्या, सिर्फ रोल होता है, रीरोल थोड़ी होता है कुछ भी। रीरोल जैसी कोई चीज होती नहीं है। Oh, not to worry, Miss Ganyu. I'll make the necessary arrangements right away. Thank you, Weishin. वैसे तेरी हुताओ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है Hello, Ganyu. सौर्या। तेरी हुताओ कब से रखी हुई है? तेरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई सौर्या। हुताओ का बिल्ड है। Greetings. What brings you here तू today? तो यूज भी करता है, मैं And तो यूज भी Cloud नहीं करता Retainer, too. हुताओ को। It's been quite some time since I last saw you in this form. डिड यू प्रे टुडे? प्रे फॉर व्हाट एरन? किस चीज के लिए प्रे करूंगा मैं? अच्छा डब्बे से निकाला है, स्ट्रॉन्ग बॉक्स किया है, ठीक है। ईशा में तो ऐसे में हमेशा डिफेंस निकालता है मेरा। कोई रिश्ता है डिफेंस रोल से? बिकॉज इफ यू डिडंट आई मैं हैव टू गेट डाउन। वाह, 2 पीस मिनावा पीस नहीं मिलम है। बिल्ड सही है बट आर्टिफैक्ट बहुत ऑफसेट है। मतलब हम ये कह रहे हैं तुम्हारा अभी तक, तुम तो होता यूज भी करते हो सौर्या, तुम्हारा क्रिम्सन विच सेट पे होता बिल्ड हो जानी चाहिए थी, हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्योंकि मैं तो अभी अभी चालू किया हूँ। ये विंडोड मोड में गेम खेलता ये भाई विंडो मोड पे गेम खेलते खेलते गेम ही बंद हो जाता है क्रॉस पे दबा के। लेकिन विंडो पे गेम कौन खेलता है ये बताओ? विंडो मोड में गेम कौन खेलता है सौर्या, जब फुल स्क्रीन मोड में खेला जा सकता है? तो जब मूवीज कम देखते हो क्या आप? वो एक डायलॉग था। हाँ सनी, मैं अभी मूवी नहीं देखा ज्यादा। हाँ मैंने अभी लाइक पिछले 1-2 महीने से कोई मूवी नहीं देखी है। सर्च डिड यू प्रे टुडे यू विल सी। मैं खेलता हूँ ना विंडो मोड पे। अलग ही लेवल का टसन है तुम लोग का भाई। पीसी लैपटॉप में फुल स्क्रीन मोड में खेला जा सकता है, फिर भी विंडो मोड खेल रहे हो तुम। पता नहीं किस बकलंड ने सिमिनावा का बोला था, ना सिमिनावा कंप्लीट हुआ ना क्रिम्सन। हाँ बहुत ही बकलंड इंसान था जिसने ही बोला था। सही बात है सौर्या। You are quite mistaken. One is not acquainted with this cloud retainer of whom you speak. One is simply a mere mortal passerby. Huh? Seems she's not buying it. Then you saw right through her. That was but a simple test. One did not expect you to be able to recognize one so easily, especially after so many years of only seeing one's other form. विंडो मोड पे गेम हट जाता है मेरा, गेम हट HUD जाता है मेरा, लेकिन विंडो में 40 FPS आता है और फुल स्क्रीन पे 15 आता है।
ये भी सही लॉजिक है सौर्या। बेस्ट पीस बता रहा हूँ, हुताओ के लिए 4 पीस इंस्ट्रक्टर है, थैंक मी लेटर। ट्राई करके देखो एक बार सौर्या, जो एरन बोल रहे हैं, ट्राई करके देखो तुम 4 पीस इंस्ट्रक्टर लगा के। क्या पता तुम्हारी हुताओ अभी 2 पीस सेट से ज्यादा डैमेज दे। इंस्ट्रक्टर तो पड़े होंगे वैसे भी तुम्हारे पास। But recognizing you is, my responsibility as your disciple. An apt observation. One was simply passing by while attending to some important business. One thought it would only be fitting to pay you a visit while in the area. सुजा भाई, RTX लगा के खेलता है, हम गरीब लोग इंटेल आयरिस पे खेलने पड़ता है। अमन तुम तो रहने दो, जिसके पास 4080 होता है ना अमन, वो ना वो ये इंटेल विंटेल वाली बातें नहीं करते हैं, समझ में आ रहा है अमन? लोग कहते हैं फुल स्क्रीन पर फ्रेम टाइम कम आता है। मेरा फुल स्क्रीन में 60 ms और विंडो पे 6 to 17 ms आता है। नहीं, फुल स्क्रीन पे एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन भी डिफरेंट रहता है ना, तुम्हारे उस पे भी रहता है, तुम्हारा विंडो जो ऑप्टिमाइजेशन इनेबल करता है ना, उससे भी काफी डिफरेंस आता है सॉरी। तो तुम्हारे सिस्टम टू सिस्टम डिफरेंस आता है चीजों का। भाई मैं नोकिया पे खेल रहा हूँ। क्या सांप सीढ़ी? सिक्सटी ms का लेटेंसी गेमिंग में बहुत बेकार है। मैंने आज तक 4080 देखा नहीं, मैं तो वैसा आदमी हूँ जो पीसी बिल्ड वाईटी पे देखकर खुश होता हूँ। ये ना अमन ऐसी झूठी बातें नहीं बोलते लोगों के सामने। तुमको पता है कि लोगों को पता नहीं है, तो तुम कैसे झूठ कुछ भी बोल लो, वो मान लेंगे तुम्हारी बातें। अमन, मैं लावा में खेल रहा हूँ। किस दिन प्रीमियम नहीं, लेकिन नोकिया से बेटर नहीं हो सकता ना सागा वो लावा पे खेलना। किसी दिन पेंटियम 4 प्लस GT 710 पे खेलूंगा जेंसिन। फॉर कंपैरिजन 630 ms का लेटेंसी के साथ वायरलेस हेडफोन पे गेमिंग में मजा नहीं आता। यूजुअली वायरलेस हेडफोन्स तुम्हारे, अगर तुम सस्ते वाले इस्तेमाल करोगे ना, जो सिर्फ म्यूजिक वगैरह काम आता है एरन, तो उस पे मिलेगा तुमको। गेमिंग वाले हेडफोन्स जो रहेंगे ना, लाइक तुम्हारा वायरलेस वाले, उन पे नहीं मिलेगा ये लेटेंसी तुमको। Wait, Paimon wasn't aware of any important. Cloud Retainer's right. We've still got something super important to do, so we can't stay here for too long today. Oh, is that so? But it's been so long since we last saw each other. मैं तो पता है एक एक दो दो FPS पे गेम खेला हूँ, पता है। आई रिमेम्बर, पता है वो क्या नाम था उसका, तुम्हारा सोनी बायू करके आता था ना पहले, सोनी के जो लैपटॉप आते थे, उस पे खेला हूँ मैं। उस पे ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, उस पे लाइक मुश्किल से 1 2 या 5 या 6 FPS आते थे गेम्स में। उस पे खेला हूँ मैं तो गेम्स, तो One simply फर्क नहीं desired to पड़ता see लेटेंसी you तो उतने ज्यादा and had मुझे। no intention of interrupting your work. A quick conversation should suffice for today. A more involved reunion should wait until you find yourself less occupied. I understand. That should be fine. While one acknowledges the amount of work that you have to deal with every day, one must also remind you to rest. Though Adepti blood flows through your veins, excessive exhaustion will still cause grave harm to your body. सुजय भाई नया राउटर लगा लिया क्या? क्यों सागा, ऐसा क्यों लगता है तुमको? पेनियम पे ड्राइवर अपडेट आता है अभी भी। मेरा HP का ड्राइवर तो हर 5-8 दिन में आता रहता है। मेरे फोन पे जेंसिन और HSR में 10 FPS मैक्स आता है। HSR में ज्यादा आता होगा, जेंसिन में कम मान सकता हूँ, HSR में ज्यादा आता होगा FPS। और विंडोज XP यूज करते हो क्या? पेंटियम के साथ लमाओ, दिमाग का दही हो जाता है। यहाँ मैं ड्राइवर अपडेट करता हूँ, वहाँ विंडोज अपडेट वापस पुराना अपडेट इंस्टॉल कर देता है। दर्द कितना
है बता नहीं सकता, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकता, आंखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे हैं जितने आपके आपके लिए गिना नहीं सकता। अरे वाह 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 जाट अच्छा था, बट तुम तो बोले जाट की चैट नहीं करोगे वापस से चैट कर दिया तुमने जाट, खुद ही का रूल ब्रेक कर दिया। और फुल एचडी में गेम खेलने से रहा, एचएसआर में कस्टम रिजोल्यूशन में भी फुल स्क्रीन कर सकता, बट जेंसिन में नहीं। अच्छा लिखा था जाट ने। It still makes one nostalgic to see you as you are now, respected and independent. When you were young, you oft begged one to cuddle you to sleep when you suffered from nightmares. Cloud Retainer! Stop! If you insist. We are running short on time regardless, so one will refrain from going into each and every story. Why don't you continue your conversation? One shall simply stand by and listen. Wow, you've been to so many new places since the last time we spoke. If you ever need anything, please just come find me at Yu-Peng Pavilion. सुजा भाई मुझसे रहा नहीं गया और आपका पीछा मैं इतनी जल्दी छोड़ूंगा नहीं। कितनी बेइज्जती करवाओगे ये बताओ पहले जाट अपनी। वो गान्यू के सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। गान्यू बिलाई कर रही है तो बहुत धोती खोल रही है। अब देखो जेंसन वालों ने ऑलरेडी ट्रेलर डाल के ना धोती खोल दी है उसकी गान्यू की, तो वो स्टोरी बता भी देगी ना तो रिलेटेबल फील होगा। सुजा भाई अभी तो और दिमाग खराब करूंगा आपका। और बीमार है हम, और बीमार कर, हम अभी बीमार है, अभी तुम और बीमार कर दो हमें जाट है ऐसी बातें बोल के। ब्रो इज बिकमिंग द न्यू वत्स ऑफ द चैनल ऑफ दिस चैनल। एग्जैक्टली, वत्स तो गायब हो गए हैं, अब यही वत्स बन रहे हैं। Also, forgive me for my presumptuousness, Cloud Retainer, but if you plan to continue appearing in this form, don't you think it'd be helpful to adopt a human name? A human name? Huh. You raise a valid point. Considering the sheer extent of one's renown, Cloud Retainer is surely too recognizable as a name. You really think so? Not that you're not famous or anything, but... You presume to know the extent of one's illustrious achievements. One would hardly think such a thing to be possible. Nevertheless, Ganyu's advice cannot be ignored. From this point on, when in public occasions, be sure to refer to one as Shenyun. Shenyun? Ah, I assume that's a reference to the full record of Pristine Pavilion. सुजा भाई कैसे हो? बढ़िया हालचाल है। स्पेसएक्स तुम्हारे कैसे हालचाल है? कल बाय द वे गाइस मैं दोपहर में ही करूंगा मोस्ट लाइकली स्ट्रीम, तो कल दोपहर में ही मिलेंगे हम लोग। जिसने भी कहा था कि मैं 2 घंटे से ज़्यादा जिनसे नहीं खेल पाऊंगा एकदम सही कहा था। मैं चला एचएसआर खेलने, हद स्मूथ चलता है इंटीग्रेटेड जीपीयू पे। वत्स आजकल पढ़ाई कर रहा है। वत्स आजकल पढ़ाकू इंसान हो गया है, या तो लड़की मिल गई है वत्स को सनी। 50-50 पर शाओ विन, फिर 50-50 पर मीको विन। मैं तो 50-50 लूज करना चाहता था ताकि न्यूलेट गारंटी हो जाए, और इसका उल्टा हो गया। कोई नहीं, अब अगली बार निकाल लेना न्यूलेट। आएगा ना जब तुम्हारा क्या कहते हैं 5-6 महीने बाद वापस से न्यूलेट, तब निकाल लेना न्यूलेट जाट। तुझे भाई चैट मिस मेरी पढ़ लिया मैंने जाट। क्या बताएं आज क्या बताएं आज पंगा हो गया कुछ बंदों से। किसमें? बीजीएमआई में। An adeptus of years past would rise with the clouds and rest with the moon. They were enlightened and wise, free and unfettered. The writer referenced Master's name to describe her carefree and spontaneous nature. Oh, that sounds super cool! Paimon feels like only the most powerful of Adepti could rise with the clouds and rest with the moon. मुझे अर्ली चिनो को वेपन चाहिए,
क्यों चाहिए? नहीं चाहिए अमन, मत ले। क्या करेगा तू अर्ली चीनो का वेपन? बैंडेज लगा के अभी जस्ट ऑन आया। अच्छा रियल लाइफ में हो गया क्या लफड़ा तेरा स्पेस एक्स में? बोला बीजेमआई में लफड़ा हुआ है तेरा। आई सी। किसने किसको पेला? मतलब तुमने उनको पेला या तुम पिल गए उनसे? Actually, those lines were originally written to describe Cloud Retainer herself. मेरे दिल का दर्द किसने देखा है? मुझे बस खुद ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रहते हैं, लोगों ने हमें महफिल में हंसते देखा है। बीजेमआई में लफड़ा लमाओ आई एम डेड। अबे मतलब अब कोई मेरे को आके बोलेगा कि भाई लफड़ा हुआ है, अब सबसे पहला थॉट ये है कि ना बीजेएमआई में हुआ है, क्योंकि बीजेएमआई में सबसे ज्यादा लफड़ा होता है। आजकल रियल लाइफ में लफड़े कम हो गए, पता है लोगों के। ऑनलाइन जो गेम्स पे रहते हैं ना लफड़े, वो ज्यादा होते हैं लोगों के। तो पहले पहले डाउट भी होता है कि भाई इसकी रियल लाइफ भी है क्या, इसकी आईआरएल में भी लफड़े होते हैं क्या। समझ में आ रहा है अमन तेरे को? Huh? Wait, so you're really that powerful? And what of it? Did you truly take one to be nothing more than a bird of bigger than... Not exactly. Paimon looked away in To be embarrassment. fair, Cloud Retainer rarely speaks of her past accomplishments. The tales of her past can only be found in ancient texts. It is said that once, a long, long time ago, there was a severe drought in Liyue. Left with no choice, many people left their homes, while others spent day and night praying to the Adepti. Although I did not live through such tragedy, simply reading about it is enough to gain a visceral understanding of all the pain and desperation during that time. हेलो भाई, मैटर हो गया, बंदे लेके आ जा बीजेएमआई में। बीजेएमआई में क्या उसकी गर्लफ्रेंड का हेडशॉट मारा क्या? नहीं नहीं नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी किसी और लड़के के साथ क्या कहते हैं बीजेएमआई खेल लिया। वो भी नॉर्मल बीजेएमआई गेम नहीं, कस्टम रूम खेल लिया। ये लफड़ा है, रियल लफड़ा तो अमन। आई हियर बाय अ फॉर्मर प्लेयर ऑफ बीजेएमआई एग्री विद दिस। सालों ने बीजेएमआई में कोठा खोला हुआ है, बैकशॉट खा के बीजेएमआई में। मेरे तो रियल लाइफ में भी बहुत लफड़े होते हैं। एक दिन दो बंदों में मेरे ट्रैक्टर में फॉर्च्यूनर ठोक दी, नशे में था एक बंदा। कोई नहीं, तू ट्रैक्टर पे ठोक देता वापस से। ट्रैक्टर थोड़ी खराब होता, उनकी फॉर्च्यूनर ही खराब होती, क्योंकि ट्रैक्टर स्ट्रांग होता है। On top of the drought, a noxious gas also began to spread through the land. If not for Cloud Retainer's efforts, much of Liyue would be nothing more than a barren wasteland. The books had this to say about what happened. Upon arrival, the Adeptus borrowed the wind to retain the clouds. Immediately, the clouds gathered together, and abundant rain burst forth from the heavens. Drought and plague were both driven away, and the people were saved. Wow. That's incredible. Mortal records add embellishments to dramatize past events. One did merely with one ought, and even if one had not interceded, the other Adepti would surely have stepped in to help. जनता नहीं किसी को बट गाली देना लगा था, तो बस थोड़ा हाथापाई हुई, बाकी एक अंकल ने आके मैटर सॉल्व कर दिया। मैं खाना खा के आता हूँ। बिल्कुल अमन, जाओ खाओ। कोई नहीं, रेस्ट करो स्पेस एक्स, दवाई लगा के। मैं तो Even बोलूँगा so, you stopped an entire drought. Can you really control the weather like the book said? Oh, Paimon suddenly has a lot more respect for you. So it was Paimon's bad for calling you Illuminated Bird before. You're not too mad. How laughable. A name is but a simple label we carry with us on our journey through the world. Why would one be offended by such a trivial matter? नहीं, मैं फॉर्च्यूनर को तोड़ा, फिर अभी मेरे से क्लेम मांग रहे हैं जो मैंने उनका नुकसान उसका रिपोर्ट कर दी। अरे तो तुम्हें बोलना चाहिए था ना, मेरे ट्रैक्टर में आकर ठोका, गलती उस बंदे की है, मैंने थोड़ी ठोका उसको। एक बंदे का नंबर मांग रहा था, एक बंदा तो नंबर मांग रहा था। बस अब
तरीके तो तरीके अब बस तारीखें और तारीखें लेकर काम चला रहा हूँ। रेस्ट क्या काम कुछ सीरियस नहीं, बस उंगली में थोड़ा छिल गया है। अच्छा, That's a relief. In that case, Paimon will continue to call you whatever feels right in the moment. मेरे को लगा ज्यादा लफड़ा हुआ, फिर जब ज्यादा फाइट हो गई उसके बाद अंकल लोगों ने बचाया, तो ज्यादा तेरे को लगी होगी अभी। Well, that is quite enough ancient history for now. Ganyu, have you had word from Shenhe? वैसे तेरे को छेड़ क्यों रहे थे ये लोग, मुझे ये जानना है SpaceX। One has heard that she procured a job recently. Have you any thoughts on her workplace? And what, pray tell, of her monthly remuneration? Moreover, does she find herself overly inundated with work? Is she allowed time off during Lantern Rite? That is a lot of questions. There is no cause for concern, Cloud Retainer. I introduced Shenhe to her employer personally. Wanmin Restaurant's business has been booming recently. So, with Chef Mao being swamped with customers, and Shangling still off and out in search of new recipes, I introduced Shenhe to staff the restaurant. I see. Most excellent indeed. One has had the pleasure of being introduced to that family. Shangling is kind and astute, while her father is loyal and reliable. One has no cause to believe that they will make Shenhe's work difficult. नमस्कार अंश, वेलकम टू द स्ट्रीम। वो स्पॉइलर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें अंश, नहीं चाहिए स्पॉइलर। क्यों चाहिए भाई स्पॉइलर? मांगा Now, हमने तुमसे it is कुछ? almost time to partake in the victuals of noon. One जबरदस्ती shall देना visit है। Wanmin Restaurant in person and see how Shenhe is doing. अरे नहीं, देखो मैं फॉर्च्यूनर को तोड़ा, वो बंदा देख रहे ये हो क्या रहा है। दोनों आए मेरे को मारने में, ट्रैक्टर पर एक डंडा रखा हूँ, दो दो दिया दोनों को, धो दिया दोनों को। वाह जाट, बताओ आज ही ईयरफोन खराब होना था। बताओ तुम्हारा पहला आर्टिफैक्ट रोल नहीं हुआ, फिर अब ईयरफोन खराब हो गया। सॉरी आपा, क्या क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? Huh? But didn't you just say that you had something important to do? Can that wait until after we've eaten? You may return to your work, Ganyu. One shall see to this matter on one's own. There will be many an occasion to dine together in the future. One is certain the opportunity shall present itself most. Of course, Cloud Retainer. Please take care. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. See you around, Ganyu! Whew. Paimon was pretty quick on the uptake there, don't you think? As soon as you mentioned important business to attend to, Paimon realized that you were just looking to cut the conversation short and not take too much of Ganyu's time. Is Paimon right? No, in fact, it was not an excuse. One is indeed visiting Liyue Harbor for an important purpose. Wait, for real? The moment is not yet upon us. Still, the truth will be revealed to you in time. Huh. She really seems to be playing up the whole mysterious Adeptus thing right now. Is it because we just heard that cool story about her powers? अरे मैं स्पेक्स पहनता तो वही कुछ बोल रहा था। कंगाल हो गया मैं, लुट गया मैं। क्या हो गया भाई, किसने पटुआ मार दिया तेरा लार्वे ने? वो ब्रो साउंड्स लाइक ही इज फ्रॉम हरियाणा। मैं अभी ऑफिस से आया हूँ। इतने टाइम तू ऑफिस आया? 10 बजे अंश? तू 5-6 बजे आ जाने वाला इंसान है। पता नहीं उन्हें मेरा नंबर दे दिया किसी ने, अगले दिन फोन करके धमकी दे रहे थे क्योंकि मेरी शुजा प्लेस की मेंबरशिप खत्म हो गई है। हाँ तो वापस ले ले लार्बन, तेरा बटुआ तो तेरे पास ही है मतलब। इसमें रोने की बात थोड़ी है लार्बन, तुम तो अमीर इंसान हो भाई। 3-4 ऐसा नोट फेंक भी दोगे ना जमीन पे तो तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगे ऊपर से कि गरीबों का भला हो गया है, मैंने लोगों को गरीबों का भला कर दिया है करके। बटुआ अर्लिचिनो के पास है। आज मैं यहाँ काम ज्यादा और मोदी जी आए हैं तो रास्ता ब्लॉक।
वैसे छुट्टी नहीं थी क्या तुम्हारी महाशिवरात्रि की? मैं सोचा कि छुट्टी होगी तुम्हारी। छुट्टी भी नहीं दी है तुमको? अभी जस्ट मैंने जेंसिन के सब से लॉन्गेस्ट डेली You get कमीशन what किया। I'm saying, कौन सा? right? नहीं थी, आज कल थी। आर्कॉन क्वेस्ट जितना बड़ा है, ऐसा भी कोई तुम्हारे क्या कहते हैं डेली कमीशन है क्या लार्वेन, जो आर्कॉन क्वेस्ट जितनी लंबा है? मेरे को क्यों नहीं मिला आज तक? मजा आया दोनों को धोके फॉर्च्यूनर भी तोड़ दिया, हाथ हल्का हो गया। हाँ लेकिन अब तुमको परेशान जो कर रहा है जाट, उसका क्या? अ सरप्राइज गिफ्ट नाम का है मॉन्स्टर्ड कमीशन है। याद नहीं मुझे कौन सा है। अच्छा याद आया लार्वेन मुझे, वो तुम्हारा क्या कहते हैं स्नेजनायन बंदा, वो क्या कहते हैं कोई लड़की के लिए गिफ्ट क्या कहते हैं हमसे कलेक्ट करवाता है, वो वाला है क्या ये कमीशन? की हाल चाल? बढ़िया हाल चाल है, आपके कैसे हाल चाल है? यमुना नगर से है, मेरे से दूर है। तो क्या हुआ, उनकी वो फॉर्च्यूनर दौड़ा के वापस तेरे घर पहुंच जाएंगे जाट, तुझे मालूम भी नहीं चलेगा। हाँ बहुत लंबा है। अरे मतलब क्वेस्ट लेट ऑकर हो वो मैं समझ में आता है, एक बार में थोड़ी ऑकर होता है पूरा क्वेस्ट तुम्हारा। वो क्वेस्ट एक बार में पूरा थोड़ी ऑकर होता है, वो तो क्या कहते हैं डेली थोड़ा थोड़ा करके कमीशन हमें आता रहता है ना। तुझा भाई कुछ नहीं, जो होगा देख लेंगे। क्या मतलब कि घर में मशीन गन पड़ी है जाट, अगर कुछ होगा तो वही चला देंगे। हाउ आर यू? माई इंग्लिश इज टू गुड। यस योर इंग्लिश इज टू गुड। सुजा भाई सुजा भाई सौर्या है यमुना नगर से, उसको बोल रहा। अच्छा अच्छा, फिर मैंने हीरो की तरह मारा ट्रेजर होर्डर्स को, हीरोइन हीरोइन नो बचाया। अच्छा Yeah, how can I not? Not even fine food is enough to distract from the presence of a fine lady, huh? Oh, I'm far more interested in getting her details than ordering any dishes. Hey, how about you ask her? You do it. No. I think you should. Wait, she's coming. What can I get for you today? Greetings, miss. I was just wondering if you'd be willing to... What would you like to order? 2 servings of more meat to go. Good chat. Bye. वो लोग सेना को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। फुल मूवी था एक कमीशन में। मेरे को जितना याद है इतना लंबा तो कमीशन नहीं है। तूने जो क्या कहते हैं आर्कॉन क्वेस्ट बना दिया उस कमीशन को, पता नहीं तुझे एक बार में कैसे मिला है। मशीन गन की जरूरत ही नहीं है अपने को, और क्या है, सांड छोड़ दोगे उनके पीछे, और क्या है जाट। सही बात है ना, मशीन गन की जरूरत ही नहीं है, सांडी काफी है हमारे तो। Welcome. It's been a while. May I take your order? Don't welcome us as guests and greet us as old friends in the same line. It's weird. Mm-hmm. Oh, and this is? This is Miss Xinyun. Master? Huh? One does not recall ever revealing this form to you before. How were you able to ascertain one's true identity with such ease? I've trained and lived with Master for more than 10 years. I would recognize you no matter what form you take. You... Is something the matter, Master? Hardly. One simply learned of your employment from your letter and came to check on your well-being. And check out the great food, too. Indeed.
It's almost lunchtime. My apologies. I'm still on the clock and can't talk for very long. Well, if it isn't the Traveler in Paimon. Are you here for Shujha? The lunch rush isn't in yet, Shujha. So, I've got things covered for now. Go ahead, sit down and enjoy some time with your friends. I'll let you know if things pick up. Thank you, Chef Mao. आई थिंक मेरा ये अचीवमेंट होगा। एक सेकंड रुक, क्या बताया था अचीवमेंट का नाम तूने लार्वेन? Leo's really got a lot going for it. इन द नेम ऑफ फबोनियस। आई थिंक मेरे पास हटना, आई थिंक ये अचीवमेंट ऑलरेडी होगा ये मेरे पास। हाँ मेरा कंप्लीटेड है ये देख, इन द नेम ऑफ फबोनियस एंड इन द नेम ऑफ अनफोर्टास, ये भी मेरा कंप्लीटेड है, दोनों कंप्लीटेड है। भाई बैठना कहाँ है? आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ। सेना को बंदे नहीं छेड़ते, सेना बंदों It को is छेड़ just देती as है। one expected. The owner of Wanmin Restaurant is indeed a most reasonable and accommodating human. वही तो हुआ सनी, वो लोग पहले सोच रहे थे कि हम छेड़ सकते हैं, जैसे ही सेना पास में आई तो क्या कहते हैं, सेना ने उनको छेड़ दिया तो बेचारे भाग गए। आज कोई लाइक क्यों नहीं कर रहा है? कितने लाइक्स हो गए हैं यांस, ये तो बता दो। सुजो भाई पहली बात तो अपना डंडों से काम चल जाएगा, अगर नहीं चला तो 4mm वाली रेडी है। देसी कट्टा जाट है। Still, the work here entails dealing with quite a varied group of people. Has this been difficult for you, Shujha? It's been manageable so far. I sometimes run into strange people, but I have figured out a way to deal with them. Seems like you've been making progress. So by dealing with them... First, I try to talk sense into them. If that doesn't work, I threaten them with violence. At this point, they usually decide they are in favor of a civil conversation. Oh, how should Paimon put this? Sounds reasonable enough. Oh, a sensible plan. One is gladdened to see you integrate so well into human society. तो 18 लाइक हुए होंगे अभी अंश, कर देंगे लोग लाइक, चिंता क्यों कर रहा है अंश? बस सुजा भाई जो भी समझे आप। And you, Master? How have you been? क्योंकि 4mm वाली वो भी आती है, पिस्टल भी आती है, पता है, देसी कट्टा भी आता है, दोनों में डिफरेंस होता है लेकिन जाट। Simply marvelous. Though Mount Outsong has scarcely enjoyed your presence recently, one has hardly found the pleasure of one's own company to be lacking. I see. Just as expected of Master. Wait, what she meant to say is she is actually miss the two of you a lot. I have missed Master quite a bit too. Even though work has been busy lately, I've already had a conversation with Chef Mao about taking some time off soon to visit Master. Oh, you did? Do make note of such matters in your letters in the future. There's hardly a need to keep one in suspense. भाई अभी रिव्यू नहीं हो रहा, रिव्यू 30 लाइक्स के बाद होगा, 30 लाइक्स पहले कंप्लीट हो जान दो, उसके बाद अकाउंट रिव्यू होगा। ऑल आई डू इज HSR इज किसी की सीली उठा लो सपोर्ट के लिए और गेम को ऑटो प्ले पे लगा दो। भाई सीली की भी जरूरत नहीं पड़ती सॉरी आजकल, पता है ऑटो प्ले के लिए है, स्पेशली आजकल 3-3 कैरेक्टर होते हैं ना, तुम सीली ज्यादा टाइम लेती है, ऊपर से पता है तुम्हारा ऑटो वाले कोई भी अगर तुम कंटेंट को कर रहे हो तो डैनहैंग ज्यादा फास्ट करता है चीजें क्लियर। Whoa, her mood shot up just like that. अभी तो 3-3 सपोर्ट कैरेक्टर आते हैं सॉरी, तो कोई ना कोई डैनहैंग लगा रखा होगा।
अब स्ट्रीम पर क्या ही बताओ, अरे सब बता सकते हो जाट, By the बताने से way, बताने पे तो। Master, since you are in Liyue Harbor, have you had the chance to visit Ganyu? Indeed. She is similarly preoccupied with her work. There was time only to exchange a few simple... Ganyu told us the story of Cloud Retainer's name. It was amazing. We never knew how powerful I see. In that case, allow me to also share a story about Master's path. Oh? Is that a problem, Master? I believe this to be a good topic of conversation. No, not a problem. One was simply caught off guard. But no matter. Please, proceed. One is most curious to see how much of one's own conversational prowess you possess. वेट व्हाट, 3 सपोर्ट डाल सकते हैं? क्यों, तेरे को नहीं पता था? सॉरी, रीसेंट अपडेट के बाद से 3 सपोर्ट कैरेक्टर डाल सकते हैं, और आई थिंक 6 तुम्हारे डिस्प्ले कैरेक्टर हो सकते हैं प्रोफाइल पे। तू इतना सरप्राइज क्यों फील कर रहा है? तू तो अभी अभी खेलना चालू किया है सॉरी। नहीं, टीम में एक ही सपोर्ट कैरेक्टर जाता है, 3 नहीं जाते हैं। नहीं, किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। हेलो हिमांशु, वेलकम टू द स्ट्रीम। English, do you review? I do review, but you have to wait for 30 likes. After 30 likes, I'll do the account review. मुझे लगा कि टीम में कह रहा है, नहीं टीम में नहीं, प्रोफाइल पे है। Master once participated in a race against Mooncarver. After Mooncarver lost, he insisted that Master's ability to fly gave her a natural edge in such a contest. In response, Master agreed to forego flying in return for being able to use one of her devices in the race. Mooncarver accepted, only to find Master with a brand new device on the day of the contest. Huh. What kind of device? It was a mechanical vehicle made out of iron. What was it called again? Oh, an electro-powered bicycle? Oh, you refer to the bicyclical Thunder Flashmobile. One spent 49 days conceptualizing and crafting it. It need only be infused with adeptal energy, and it can cover thousands of miles in one day. बाइसिकल थंडर फ्लैश मोबाइल। भाई इन्होंने इलेक्ट्रिक बाइसिकल को इन्होंने क्या बना दिया है यहाँ पे? भाई ये सिली और जिंगलू का अल्ट साउंड में साउंड तो ऐसा एकदम दुगदुगी मचा दे। व्हाट डू यू मीन दुगदुगी मचाते? ये कौन सा साउंड है भाई? सॉरी, दुगदुगी। Oh, it boggles the mind why Mooncarver ever supposed he might best me in a contest of locomotion. Though he sprinted with all his might, he could barely. Alas, the one flaw of my mechanism lay in its weakness against mountainous terrain. One was thwarted mere seconds from victory, when it was thrown off course and failed to make it across the final stretch. Truly a most unfortunate turn of events. Anyway, do go on, Shujha. Master, that was the end of that story. Is that so? With you gone, one has seldom felt the desire to call upon those old fossils for another contest. What is a race without spectators, after all? वो मुझे भी नहीं पता दुगदुगी का मतलब, लाइक जो वो साउंड आता है ना वही नहीं, उसमें दुगदुगी वाला साउंड थोड़ी आता है, उसमें धक 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 ऐसा साउंड आता है, धक 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 ऐसा साउंड आता है, दुग 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 वाला साउंड थोड़ी आता है सॉर रहा। और रही बात क्या कहते हैं जिंगलू की, तो जिंगलू वाले में वो ऐसा लगता है कि कौवा चिल्ला रहा है बैकग्राउंड में अल्टीमेट के टाइम। सुजय भाई आपके पास टाइम हो तो फ्लोर 12 कर दो, मैं ऑफ स्ट्रीम कर दूंगा हिमांशु, ऑफ स्ट्रीम कर दूंगा मैं तुम्हारा फ्लोर 12 मंडे वगैरह बैठ के। तुमको पहले देना चाहिए था पता है हिमांशु, मुझे अकाउंट लास्ट वीक देना चाहिए था, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 4-5 बंदों को किया था, एक तो फ्री था ऊपर से बीमार था, तो बैठे बैठे क्लियर ही कर दिया था लोगों का स्पाइरल जितना भी हो रहा था उतना, तो लास्ट वीक देना चाहिए था सबके साथ। मेरे को दे दो, आईडी पास भेज देना हिमांशु, डिस्कॉर्ड में अवेलेबल है रहा, मेरे को ओटीपी चाहिए होगा क्योंकि बिना ओटीपी के नहीं तो नहीं कर पाऊंगा।
क्लाउड रिटर्नर आई की जगह वो वन इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्या मतलब कि और कुछ अच्छा नहीं लगता क्लाउड रिटर्नर में? मैं बाद में आता, बहुत थक गया। हाँ रेस्ट कर ले अंश, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्ट कर ले, रेस्ट कर ले। आईडी पास दिया है, ओटीपी देना है। हाँ तो जब मैं लॉगिन करूंगा ना तब मैं मांगूंगा ओटीपी, तो अवेलेबल रहना है मानसो, क्योंकि ओटीपी के बिना नहीं हो पाएगा। सेम गोस फॉर अमन, अमन को भी ओटीपी देना पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि ये डिफरेंट सिस्टम है ना मेरे पास, तो इसमें लाइक किसी का भी लॉग्ड इन नहीं है ऑलरेडी, तो आई डोंट हैव डिटेल्स किसी भी अकाउंट की। Have you been lonely, Master? Lonely? Huh. At one's age, entire human generations come and go in the blink of an eye. Even one's own self-directed musings can span several days and nights. 'Tis a most foreign sentiment. The mere mention of it is preposterous. What is the reason for that look upon your face? It's nothing. It's just... Well, Paimon gained a lot of respect for you after listening to that story of you summoning the rain and everything. But all it took was a few words out of your mouth and it's like you're back to being that illuminated bird again. आप कहाँ पर शिफ्ट हुए थे? मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ ना ससीमांसो। मैं दोपहर के टाइम शायद स्ट्रीम कल करूँगा ना। एक काम करना, कल दोपहर में आ जाना स्ट्रीम पे हिमांशु, मैं कल दोपहर में ही कर दूंगा तुम्हारा और अमन का स्पायरल। लेकिन फ्लोर 11 तक क्लियर करके देना, मैं नहीं क्लियर करूंगा क्योंकि तुम लोग का कल दोपहर में ही कर दूंगा स्ट्रीम का टाइम स्पायरल में। I was just a little bit confused. Which one of the two is the real class? To me, they are both, Master. One is the master. Huh. One finds one's... This is not to say that your words paint an inaccurate... She got like, what, 2 sentences of flattery from her disciple? And it's as if... Do you have any empty tables? Hey there, could we get another fish stew? I'm hearing more guests come in. I should get back to work. Alright, good luck with the lunchtime. Mm-hmm. I'll और कोल्ड हुआ है क्या? हाँ सर्दी और खांसी अभी हो रही है। Yummy food! Paimon's gonna feast! Can you eat this kind of food, Cloud Dinner? One is fond of all kinds of delicacies and delights in a multitude of flavors. The dishes here demonstrate no shortage of culinary skill. Their unique flavor profile has left one more than satisfied. In fact, one has been struck by quite the fit of inspiration. One has already begun to conceptualize the next generation. Everything's so tasty! A bit too hot at times, but still super tasty. I'm sorry, miss, but our tables are full. Shall we try somewhere else, Granny? But it smells so delightful. Can we really not? Well, you could always check with some of the other guests and see if anyone's happy to share a table. Okay, I'll ask around. पाइमन हवा में उड़ रही है, बोलेंगे तुम तो बैठी ही नहीं हो, तो हमारे लिए 2 जगह खाली हमको दे दो। Would you mind letting us share a table with you? There are no empty tables left, so... मेरा भी एग्जाम है इसलिए शाओ के लिए ग्राइंड नहीं कर रहा। कोई नहीं, एग्जाम पे फोकस करो, शाओ तो आते आते रहेगा उसका बैनर। Ah, well, Paimon doesn't mind. What about you guys? As long as you don't mind our chatter. Great! Thanks so much. My name is Shuyu, and this is my granny, Yuendai. Granny? Yep. Is there something wrong with that? No, Paimon's just a bit surprised. She looks so young. Yeah, a lot of people compliment Granny on her youthful looks, but she's actually much older than she appears. वेट, ये यूंडाई कोई है क्या? Granny, why don't you take a seat? Come on, it's not polite to stare. कहाँ से यंग लगती है बुढ़िया? यंग ही होगी सनी। ये मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये यूंडाई जो है, ये ना कोई और है, जैसे क्लाउड रिटर्न जैसे हमारी शानयून वाला फॉर्म लेके बैठी है ना, वैसे ये भी कोई अडाप्टाई है।
तुम्हारी। Huh. Have we met before? No. Tis a fated meeting then. Please, take a seat. What would you like to eat, Granny? I can order for you. I want braised earthworms. They always pop up out of the ground after a rainstorm. No, not this again. Granny, there's no braised earthworms on the menu. ये कोई तो है, ये जो है ना, ये ग्रैनी कोई तो अडाप्टाई है। Braised earthworms? Well, that sounds weird. Do people actually eat that? Can't hurt to ask. Right, that's what Paimon was thinking too. I need any help? Help? Oh, do you mean with Granny? Thanks, that's nice of you to offer. Granny has pretty bad dementia, so her memory's getting worse all the time. She's always saying things that sound kinda confusing. Actually, her memory's been bad ever since I was little. But it's gotten so bad lately that I even have to remind her who I am every morning. What about your parents? They died young. It's just me and Granny now. मच्छी है क्या जो अर्थ बॉम्ब खाती है? क्या पता क्या है? Oh, पता चल जाएगा आगे स्टोरी में कौन है ये। but it's okay. Don't feel bad. Granny loves me a lot, and I love her a lot too. Sure, it's hard at times, but you just gotta make the best of the life you've got. Wow, you're really tough for your age, kid. You're too kind. And me? Oh, what about me? You're tough too, Granny. Plus, you're really gentle, and you're always there for me. Yes, and it's hardly as if I forget everything. I still remember the important things. Wait, what was that really important thing again? Ah, I remember now. It was a dream. I had a dream where everything was dark. Someone was standing in front of me. She told me to come and find her, and that once I'd found her... Huh? That sounds super important. But how come you've never told me about it before? It was just a dream, so I forgot about it. But I'm in a good mood now, and you know, I believe I've had this dream a great many times. But just how many? Wait, so you have a reoccurring dream where someone's talking to you? That sounds spooky. Oh, does that mean you're possessed? Unlikely. Her eyes are clear and her breathing remains calm and level. One sees no signs of possession. Are you sure? Who do you take me for? Is one not an adept? Am I not an expert? Huh, you're right. Paimon almost forgot you're the expert. In that case, do you still remember what the person in your dreams looked like, Granny? Not anymore. Although, I have a sense that she looked rather like me. But not as I am now. My younger self. A younger version of Granny? This is just getting weirder and weirder. What is going on here? As one said, fate must have brought us together. You may leave this situation to me. Are you sure? So, what are your names? Paimon's Paimon. I am Just traveler. Shenyun is fine. Thank you all so much for offering to help. But first, I'm sorry for asking, but, how do you want us to pay you back? Oh, we don't need any payment for this. We are just curious about your situation and want to help if we can. Thank you so much. You're welcome. But Miss Shenyun, what exactly can we do to help out this Granny? All we have to go off is that dream. Where do we start? That is elementary. Since her dreams portray her younger self, then we shall retrace the steps of her youth. Once we have revisited those places, her memories will... Sounds like a plan. So, Granny, do you remember which places you went to when you were young? Why, of course I do. The heavens above, the earth below, the wispy clouds, and the emerald mountain streams. ये मच्छी जैसी हरकतें कर रही है। Okay, taking that as a no.
Might have an idea. Once, when I was really little, my dad told me that Granny used to be a martial artist heroine who saved loads of people from a disaster. If it's true, then maybe they wrote about it in the history books or something. A martial arts heroine? Oh, Shinjo knows tons about Liyue's chivalric traditions. If anyone knows about the heroes of the past, it's him. Let's go find him at the Feiyun Commerce Guild. Are you leaving already? But I'm still hungry. I'll go order some food, Granny. If there's nothing on the menu you especially want, I'll just get a few. It seems we must part ways for now. The Traveler and Paimon are bound for the Feiyun Commerce Guild, while Yuendai and Shuyu shall remain here and partake of their lunch. As for myself, I have matters to discuss with Streetward Rambler. Streetward Rambler? Oh, you mean Madam Ping! Precisely. Let us meet at Yujing Terrace once you are ready. शूशेंग कैसी है? शूशेंग नहीं है, बेकार है सर यार। टू बी ऑनेस्ट पता है, उससे बेटर पता है तुम्हारा ट्रैवलर ही है। इवन तुम्हारी क्लारा बेटर है। शूशेंग नहीं बिल्ड करना चाहिए। देख मैं तेरे को बोलूँगा एचएसआर में जितने कम कैरेक्टर बिल्ड करेगा ना, उतना तेरे को फायदा होगा, क्योंकि रिसोर्सेज वैसे भी कम रहते हैं तेरे पास एचएसआर में। सॉरी, तो राइट कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। जैसे सिंचुए बिल्ड कर सकता है तू, तुम्हारा ये डीओटी के लिए तुम्हारा उसका क्या नाम है, सैम्पो बिल्ड कर सकता है। लाइक राइट कैरेक्टर बिल्ड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सुशैंग वगैरह पे रिसोर्स खराब कर देगा ना, बाद में यूज़ नहीं करेगा तो फिर वो दुख लगेगा कि भाई मैंने बिल्ड ही क्यों किया। क्योंकि स्टार्टिंग में अच्छा लगेगी देख के, बट एक्चुअली में उतनी अच्छी नहीं है। Huh. It's you two. What brings you here? Shincho! Great, we found you! We wanted to ask you about something. That's not a whole lot of information to go off of. I don't know, I can't pinpoint her identity from your description alone. But considering her age, I am reminded of a nameless heroine who's been featured in various chivalric novels. Nameless heroine? That's right. The novels often speak of a great drought from 50 years ago. As the people suffered, a nameless heroine appeared and began to clear away evil spirits and bandit camps. The people idolized her, but never learned her name. All they knew was that she always acted alone. Later, though, she supposedly fell in love with a similarly noble-minded exorcist from Mount Tianheng. They were well matched in more ways than one, often fighting together as a fearsome duo of otherworldly strength. After the drought ended, the heroine and the exorcist left the public eye and began living a reclusive life in the mountains. All that remained were tales of her incredible accomplishments. The way this nameless heroine faded from fame into obscurity later in life is not too dissimilar from Miss Yuendai. I hope that's somewhat helpful. Thanks a lot, Shincho. We knew it'd be worth talking to you. It's nothing at all. Just something I came across while reading. I did do a bit of extra research on her story, but it was just out of personal curiosity. Well, Paimon still thinks that's super cool. Oh, wait, Shincho, if you've read up on her, do you know of any places often associated with her? Let me think. In the novels, the nameless heroine always appeared near one of 3 places. Wangshu Inn, the area just north of Jueyun Karst, and Qingyun Peak. Perhaps the real-life heroine who inspired the character was also often seen near those 3 places. That would explain why those locations appear in the various novels written about her. Thanks so much, Singh. You're welcome. To be honest, I found some parts of the story confusing when I first came across it. If Miss Yuendai was indeed the original inspiration for the character, she may just be able to help me put the pieces together. It's rare for a chivalric hero to fade into obscurity during their lifetime, even after retiring from the public eye. But no one ever saw or heard from the nameless heroine again.
There were even rumors that she became extremely... I've never understood why someone would go to such lengths to erase themselves from public memory. It's almost as if she was trying to hide from something. There's probably far more to the story than what's been... We'll be sure to tell you if we manage to uncover the truth. That's a deal. Perhaps, behind the truth of it all, there lies a story more fantastical than any work of fiction. Paimon feels like we just learned so much from Xingqiu. A drought, a nameless heroine, a life of seclusion. Wait, why does the story sound super familiar? Oh, right! There's a drought in this story, too! Xingqiu, are droughts super common in Liyue or something? Well, they used to be. But people have long since developed methods to prevent them. Like by cultivating the soil or digging canals. So while droughts do happen from time to time, they are rarely regarded as true disasters. The drought 50 years ago is probably one of the worst we've had in the last several centuries. The crops withered, the streams ran dry, and the monsters in the mountains became rabid and agitated. Countless caravans... That sounds awful! Yeah, and that's exactly why the nameless heroine was so beloved. She must have been someone of true integrity. Still, as terrible. They say that back in those days, disasters were both more severe and... Do you have any other questions? We're good for now. We're just going to head back and meet up with Miss Xianyun and the others again. Paimon hopes that Granny Yuendai will be able to remember more of her past. She used to be a great hero who saved many... Anyway, we'll be off now. See you some other time, Xingqiu. It's no problem at all. शियान्यून से मिलना है वापस जाके मैडम पिंग के पास है ये I have recorded the tune that you requested. I hope it will be of help to you. Oh, thank you. Straight word, Ping. What has amused you so? Oh, it's no serious matter. I was just reminiscing about the last time I saw you in this form. Time has wrought such change in this world, and yet you appear just the same as ever. Time has little bearing on one's existence, nor has one keenly felt its effects whilst dwelling at Mount Outsong. Nevertheless, Ping, one would like to seek your counsel on a personal matter. Oh, why so formal all of a sudden? I must say, you're making me a little nervous. What is it? Well, the inquiry... Approximately how much more would one need to afford a comfortable life in the harbor, not unlike the one that you yourself lead? It does not require as much as you may think. Still, do you mean that... Cloud Retainer, Madam Ping! What are you two talking about? Nothing save for some trivial matters. Have you unearthed any useful details? Xingqiu has a theory, but let's save it for when Chuyu and Miss Yuendai have joined up with us again. Do not be troubled, young lady. Here, have some tea. Thank you so much. What do you think, Chuyu? Does it match up with what you know of your granny? According to the story, the nameless heroine eventually fell in love with an exorcist from Mount Tianheng. Maybe that's my grandpa. I don't have many memories of him, but there was this one time I found a box in our attic full of a bunch of weird sigils. We should probably pay visit to the 3 places mentioned in the book. I think so too. Granny might remember something once she's returned to a familiar place. What marvelous tea. I can taste the dew's sweetness in this cup. It's as if I was taking a stroll in the mountains, thoroughly one with nature, and... Is that so? Then please drink as much as you like. There's no need to hurry. At our age, it's always nice to slow down and take the time to appreciate pleasant conversation among friends. Thank you.
Let's rest here a little while then. Okay, since we have the time, can I ask you something? Sure thing. What would you like to know? I have a secret I want to tell you. Let's go talk over there. You can taste the sweet. It's just a feeling. The sensation of stepping out into the mountains on a cool morning, gazing upon the small droplets of water hanging from the leaves. 20th. And Welcome to the stream, feeling the Kajuto. sweet stream of water soothe a parched throat with a sense of What's wrong, Shuyu? Well, I've been kind of meaning to ask ever since we started talking in the restaurant. But are you guys all adepti in disguise? Oh! About that. Why do you say that? Well, you guys just seem super special. Plus, I think I might have heard Miss Shen Yun call herself an adeptus. Oh, must have been a slip of the tongue. Shen Yun, since you were the one who, misspoke, maybe you can explain to Shuyu here what you really meant by that. One is indeed an adeptus. Is that of some concern to you? Huh? I knew it. You don't sound surprised Well, at all. one time when I was a little kid, I saw a pure white illuminated crane. I had this super high fever, and Granny wasn't around. I was feeling all icky and gross. But then this snowy white crane flew down from the sky. ब्रो जब आप गायब हो गए थे मेरे साथ कैसे कैसे हरकतें हो गए मतलब ऐसे सर मैं 2 बार अर्ली मिल गया ब्लैक स्पार्कल 2 सही है ना काजुतो? She put me on her back and flew me to her cool adeptus house and fed me some sort of magic potion. When I woke up, I was already back in my bed and my fever was gone. I really wanted to thank her, but I was too sleepy to stay awake, so I never got the chance. So I just kind of wanted to ask if maybe any of you have ever met an adeptus like that? A pure white illuminated crane? The only two we've ever met are blue and white and black and brown. Have you ever met one that's pure white, Clever? Never has one met an adeptus with such features. One surmises such a description is but a hyperbolic embellishment that oft results from narrative account. That's weird. Was it really just a dream then? Well, even if it was just in my head, it doesn't matter that much anyway. All I really want is to help Granny recover her memories. I'm really grateful for all your help. ऐसा कैसे मजा आएगा ब्रो कंपटीशन इजी हो जाता है इफ I'll be that lucky अच्छी बात है ना लकी होना भी अच्छी बात होती है काजुतो बुरा कुछ नहीं होता है Leave it to us! Now that we know the 3 locations, we just need to visit them one by one. Let's go to Wangshu Inn first. Okay, I'll go get Leaving already? Well. Let's see. Wangshu Inn. Do you remember this place, Granny? Yes. The fish here is very delicious, and if you look out into the distance, you can always spot a bird. I believe I used to have a room here. It had a window. Yes, I spent a lot of time looking out that window. Which room was it again? Let me look. I like struggling bro but it keep resisting it HSR but Kajuto you never struggled in your life how do you know you like struggling Kajuto then I'll come with. Paimon's still having some trouble understanding what she's talking about, but if she's so familiar with this place, that must mean she lived here, right? Whoa! Shell! What are you doing here all of a sudden? You scared the living daylights out of Paimon!
I sensed a non-human presence and decided to come take a look. If you're here, then there's likely no trouble afoot. I suppose there's no cause for concern. It's been a while, Cloud Retainer. I see you have returned to your previous form. You have met her in this form I before? have indeed. I fought alongside her in this form on many occasions during the Archon War. Oh, wow! What was she like during the war? Oh, wait, let Paimon take a guess. Was it anything like this? Behold, the glory of one's newest invention, the Bang Bang continuous fire mechanism. Hands up and surrender, or be prepared to face the full might of the Adepti. जपाड और मार्च भाई मारा जा रहा हूँ हर बार. जपाड बेटर है. मार्च एक्चुअली तू एक ही कैरेक्टर को दे पाएगा और बार बार स्किल पॉइंट यूजर्स होंगे ना तो ज़्यादा मतलब दूसरे कैरेक्टर के लिए स्किल पॉइंट नहीं बचेंगे. सॉरी तो जपाड बेटर चॉइस है तेरी वहाँ सील्डर लेना है तो. साइड इफेक्ट ऑफ अल्ट अकाउंट. Struggle is real. I mean, you have a struggle about creating alt accounts, not getting characters, Kajuto. So that kind of struggle is different kind of struggle, you know, Kajuto. An impressive imitation. Paimon knows her all too well. Even so, Cloud Retainer was not always as ostentatious as you describe. You may be unaware, but her talent with Adepti sigils is just as formidable as her skill and mechanic. The Archon War reached its peak after Guizhong's death. The Cloud Retainer who fought beside me in those devastating battles was taciturn and solemn, only speaking when she had to activate her sigils. A Cloud Retainer who barely talks? Paimon can't picture it. But what happened after that? If you were so powerful in your human form, why did you decide to take up your birth? Once one had bid farewell to the world of mortals, what use would one still have for such a shape? When dwelling between mountain and forest, away from the struggles and troubles of the mortal world, a mortal form is hardly the most fitting of choice. After the war, Cloud Retainer retired to Mount Outsong, only revealing herself to the occasional visitor, and always in her avian form. Although I do believe there was an occasion some 30-odd years ago, when she decided to don her human form. I believe it was for the purpose of... One believes there is little need to relive bygone matters. Granny, are you okay? अब मैं चलता हूँ सोने. शुभ रात्रि sorry. Back then, at this place, Perhaps this conversation should end here. I shall take my leave now. Should you encounter any trouble, you need only call my name. Everyone, I think Granny is finally beginning to remember her past. Slowly now, calm your mind and recount what has been recalled. A long time ago, I stayed here to recuperate from my illness. Huh. So what Shinto said was true! You did fall ill! Was that why you went into hiding? I don't remember. I'm very sorry, but I can't even remember the name of my illness. The only thing I can remember is that it took a great toll on me, and there was no cure. I was confined to my room in Wangshu Inn, where I spent many days unconscious. I'd come to every once in a while and stare at the migrating birds outside the window. It was a solemn sight. One day, I met a traveling merchant. Upon hearing of my illness, he sold me a bottle of soul-revitalizing tea pills. Wait, ये कौन है? He told me that the pills were concocted using Adepti blood and could be used to alleviate my symptoms. Sure enough, I made a full recovery. My illness remained dormant for several decades after that. I want it on my main ID though, bro, and I guess I have faced it on GENSHIN when I sold my golden lucky ID and started playing my alt account as my main ID. गलती 10 विश हो गया और वेपन मैनर पर क्या मिला वैसे अमन तेरे को 10 विश किया तो वेपन मैनर से. So the dementia you're suffering from now is actually... Wait, but if your illness remained dormant for several decades,
Are you saying that what you're going through now is just a relapse of what happened all those years ago? And it was all thanks to the pills that you managed to keep the symptoms in check? Paimon's brain kinda hurts. Do you remember anything else? लायंस रॉर, अच्छा लायंस रॉर मिला है। चल कोई अच्छा को 5 स्टार वेपन नहीं मिला तेरे को का अमन। I'm sorry, I don't. Oh, if only I wasn't so useless. Hey, you're not useless. You've done so much for me. Watched me grow up. Raised me. How could you say that about yourself? Oh, fret not, dear child. Granny was just a bit frustrated. That's all. The recovery of a person's memories is a gradual process. Finding pieces of one's past is always superior to not finding anything at all. Next location. There isn't really a landmark there, so where should we start? Oh, Paimon's got it. Let's check out the houses in the area first. After all, if she was there for any length of time, then she would have stayed somewhere, right? Oh, Paimon's really got her thinking cap on today. At this rate, we'll recover all of Granny Wendai's memories in no time. खुजली हो रही है थी, इसी बात पर एक तमाचा भी मारा खुद को। कोई नहीं अमन, मेरे को भी खुजली हो रही है, तू देना अकाउंट में और मारता तेरे वेपन और पोल। आई वांट होयो टू मेक एनपीसी मोर रियलिस्टिक। आई मीन दे कैन नॉट मेक मोर रियलिस्टिक देन दिस काजतो। अब तुम्हारे लिए क्या 3D में बना दे गेम जेंसिन, वो जेंसिन वाले हैं, ताकि रियल पर्सन ही एनपीसी बन के आए तुम्हारे लिए काजतो है। व्हाट डू यू मीन बाय मोर रियलिस्टिक? इससे ज्यादा रियलिस्टिक थोड़ी हो सकता है। आई वॉन्ट एनिमे वुमेन्स। एनिमे भी क्यों चाहिए तुमको, पूरा ही ले लो ना तुम काजू, तो वही बना दो यहाँ पे जेंसन को। Whoa, why are there so many treasure hoarders here? Guess it's time to round up some bad guys. Do you remember anything about this place, Granny Wendai? Let me think. I feel like I've been here before, but I don't think I stayed here too long. Got it. That's okay. Wait a second. If I remember correctly, I believe I brought... Ah, yes. I brought some sweet snacks with me. Go on, take some. You need to eat a lot if you want to grow big and strong. Oh, thank you. Then Paimon will help herself. भाई ये बहुत दौड़ाएंगे क्या इसमें स्टोरी में? So we can just wait for anime, Genshin anime. Paimon sees an abandoned house. Why don't we take a break over there? This place... it's... Did you remember something, Granny? I remember. Shujha. This is where your father was born. It was a moonless night. I had been injured, so your grandpa was supporting me. We fled together with some being in the fog behind us in hot pursuit. I had exhausted my strength when the labor pains came on, so we took refuge in this house. Your grandpa set up a barrier outside, but neither of us knew if it could hold the monsters back. I remember that night. I remember falling to my knees, reciting a prayer over and over. I alone am the source of this sin. Punish me as you wish for forsaking my oath.
but spare my innocent child. लोग मिलते हैं कहानी बनाकर, दिल में बस जाती है निशानी बनकर, जिन्हें हम रखना चाहते हैं अपने आँखों में, वो क्यों चले जाते हैं पानी बनकर। वाह वाह जाट, वेरी नाइस जाट। Sin? Oath? Did you do something wrong? I don't know. I don't remember. I only remember praying in the darkness with all my strength until the sun finally rose again and the fog cleared out. Eventually, the house was filled with the sound of my baby's first cries. That baby was your father. I remember I clutched him tight to my chest and wept tears of joy. It was the first time I'd ever felt such happiness in my life. My dad? He was my pride and joy, and so are you, Shuyu. You're so much like him, and I love you both so, but you're always going to be different from me. Why? Just what did I do? किडनी टचिंग। सनी बेइज्जती मत कर, बहुत मुश्किल से बनाई है उसकी याद में। किसकी याद में जाट? कौन है वो I don't care what you might have done, जो Granny. तुमको छोड़ के गई है? You'll always be the person I love more than anything. You're too sweet, Shuyu. I'm lucky to have you with me. If not for you, I would not have had the courage to come here, to try to remember. All right, let's not stand around any longer. There's one... If one recalls correctly, the next place should be Qingyun Peak. You and I, how fares your health? I may be a bit slow, but I'll do my best to keep up. I'm sorry to keep everyone... सुजा भाई छोड़ के तो तब जाती जब वो मुझे मिलती। Climb on, I shall carry you to the top. Oh, such lightness of weight. All those who grow old grow frail in the end, do they not? First, you lose your memory, then your health. Eventually, you end up losing everything. My only wish is to depart this world with a lucid mind, to free myself of this torment and the burden it places upon others. Fret not, you have my aid in this endeavor. ब्रो, क्या आपको कभी एंजाइटी फीलिंग हुआ था? हुआ था? सबको होता है काजू, तो नॉर्मल है। We're finally here. Does this place feel familiar to you, Gran? Let me see. How strange. Have I lived here before? When we were at Wangshu Inn and the abandoned house earlier, though I couldn't remember everything, I still felt a sense of familiarity. I could easily picture myself in those places, but here, I don't have that feeling. Perhaps I did come here in the past, but it just didn't leave a strong impression on me. But did the stories get it wrong then? We can't expect them to get everything right. Yeah, that's true. But they're also the only thing we have to go off of. Paimon was hoping this place would jog Granny Yuendai's memory just like the others. I'm sorry to disappoint you too. It's all right. We're not going to give up yet. We'll figure something else out. Just you wait. Thank you. If only I could remember. Huh? That way. What's that mountain? Oh, let Paimon look! Huh? Isn't that Mount Outsang? Looks like we've come full circle. Mount Outsang. Mount Outsang. मुझे अच्छा नहीं लगता ये फीलिंग। सुजा भाई, वो मेरा दोस्त था ना जिसका ब्रेकअप करवाया था, फिर से मिला और बोलता है आज के बाद किसी कैरेक्टर को बुरा नहीं बोलूंगा। सही है ना, उसने अपना सीख ली। अब उसको सीख लग गई, अब वो नहीं करेगा ऐसा नहीं। सुजा भाई, बस मेरे फ्रेंड की क्लॉथिंग स्टोर है,
वहां पर देखा था उससे, पर उसके लिए फीलिंग आई, वो किसी के लिए नहीं आई। कोई नहीं जाट, ढूंढो उसको जाके कहाँ पे है वो जिसके लिए फीलिंग आई थी। फीलिंग क्योंकि एक ही बार आती है, बार बार नहीं आती है। हाउ टू सील इमोशंस एंड फीलिंग्स परमानेंटली। Granny, जाट से are पूछो, you okay? बताएगा वो। Don't push yourself, Granny. It's okay if you can't remember. You shouldn't do something that makes you sad. Mount Outsong, What am I really? Mount Outsong holds some familiarity to you? It does, but I can't go back. Are you feeling unwell? My head, it feels all heavy and dizzy. What is wrong with me? Cloud, Miss Xianyun, is there anything you can do? Let us go to Mount Outsong. But... Fret not, all will be well. You and I, you have already given more than enough to the pursuit of this endeavor. You may leave the rest to me. I've prepared something that can aid you in suppressing the fear in your heart and restoring your lost memories. It currently resides at Mount... Wait, really? When did you do that? I never leave anything to chance. All will reveal itself when we arrive. I sees him like broken guy. बस परसों का लगा हुआ है उसी ढूंढने। मेरे दोस्त बोल रहा है कि मेरे लिए ढूंढेगा उसे। अच्छा जाट, सबसे इसी तरीका पता है ये है कि जिस दुकान पे वो मिली थी ना, उस पे हो सकता है उसका एड्रेस या फ़ोन नंबर होगा। वहाँ से फ़ोन नंबर या एड्रेस जाके ले, सीधा लगा ले फ़ोन और एड्रेस। सॉरी बट इट्स द ट्रूथ। आपने कजिन की शादी के लिए साड़ी खरीद रही थी। तुझे कैसे पता कि साड़ी खरीद रही थी वो? जाट है। इतना कैसे मालूम है तेरे को कि वो साड़ी खरीद रही थी? पहली पूरी डिटेल निकलवा लिया क्या भाई तूने? तुझे भाई एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, लगता है आप ही लड़कियों के नंबर ऐसे निकालते हो। अब समझ आए, समझा मैं। देखो चिल्ला चिल्ला के सबको मत बताओ सनी, अगर पता है तुमको तो खुद के पास रखो। मतलब परसों से जब से उसे देखा है तब से उसी की याद आ रही है। बोला तो ना, जाके नंबर निकालो, चाट उसका एड्रेस निकालो, पहुंच जाओ घर, सीधा कन्फेशन मारो। अच्छा अच्छा अच्छा। Just tell Paimon already! What's this thing you've prepared? Here, this is it. Huh? But isn't this the mechanism that you were tinkering with when we first got here? Precisely. A recent one at that. I am most pleased with the result. I call it the Suspensus Somnium mechanism. It periodically releases a soft breeze, which when paired with a gentle adeptal tune, can help the listener subconsciously relax and even enter a semi-hypnotic state, soothing agitation and anxiety, relieving exhaustion and insomnia. Its potential uses are numerous indeed. And of course, it can also aid in the recovery of lost memories. Whoa, what a cool gadget! But if you had it all along, why did you keep it to yourself until just now? New trigonometry on 11th. There is always going to be a new trigonometry का जो तो। We could have come to Mount Outsong right off the bat and saved time on a lot of floating. How preposterous. Had you and I not recalled much of her past through her own efforts, the device would have nothing to draw upon. We Adepti can only help those who first resolve to help themselves. Had she lacked such determination and strength of character, one would have little to offer in way of assistance. Paimon thinks she gets it now. Hey, what's that other thing? As previously mentioned, a gentle adeptal tune is required to take full advantage of the mechanism. One secured such a tune from Streetward Rambler.
Only with her melodies can the mechanism reach its peak. Oh, Paimon can feel what you mean. Paimon's body feels light as a feather. It's as if she's lying down on a warm patch of grass after a... And you and I. Is the mechanism helping you to relax? अब बस ढूंढ रहा हूँ उसी के अलावा गंज रही थी कानों में। मुझे नहीं पता, मैं बाइक पर ऐसे ही घूमने गया था, मेरे फ्रेंड की शॉप पर रुका, वहीं उसे देखा। There is no other way but to face it with every brain cell that I have got. You can't escape the trigonometry. क्यों काजू तो? It appears she has already succumbed to the depths of reverie. Come, join one on this side. We shall give her some time to herself. The drought is over. But why do you look like you want to cry? The potion. It's nearly run its course. I've never regretted meeting you. Not even for a second. Please. Please, no. Have you forgotten? This is the world you left behind. One of gentle breeze and morning dew, perfectly straddled betwixt the realms of heaven and earth. This is your home. This is where you belong. You should have never left. Wait. The you of the past, the me from not that long ago. We should have never. Wait, C is an adapter है? हाँ. बट तेरा केस डिफरेंट है ना जाट। उसका ब्रेन सेल ट्रिग्नोमेट्री को नहीं संभाल पा रहा है, तेरा ब्रेन सेल वो लड़की को नहीं संभाल पा रहा, दोनों में डिफरेंस है। So that is the truth. No wonder this place is so familiar. Granny! Granny, are you okay? Cloud Retainer. Your memories have returned. Wait, did you just call her by her full name? Does that mean you already knew each other? Yes. I now remember everything. Granny, please don't cry. I'm here. I'm here. Oh, don't worry, my dear child. Granny is fine. I'm so sorry, everyone. You've gone to so much trouble on my behalf. It's all come back to me now. The most important thing that I had forgotten was the truth of what I once was. One can sense the guilt that now plagues your conscience. Reclaiming a truth long buried is sure to come with a myriad of complex emotions. Perhaps one should recount the story on your behalf while you compose yourself. No, it's okay. Now that I've remembered, I must face my memories head on. कोई ना ब्रो, 50% ब्रेन सेल्स आप रिस्टोर कर सकते हो कुछ मेथड से, that you can create more new brain cells where you can store more faults of her. Shuyu, everyone, I cannot thank you enough for all your help. I'm ready to tell you my story, if you're willing to listen. Please, Granny, don't force yourself. What happened in the past? I know, dear child. My feelings for you are exactly the same. It is for this reason that you deserve to know that some time ago, I made a terrible mistake. One for which I could never atone. Is this the sin that you mentioned in Dwayne Karst? What happened? I am, in truth, not a human being. My real form, one that I held for centuries, was that of a wild crane. I spent many, many years living on Mount Outsong,
bathing in the soft breeze and drinking the sweet dew of the mountains. At some point, I somehow gained wisdom and sentience. The Lord of the Mountain, Cloud Retainer, became aware of my existence and began to share many stories with me. She even passed on the secret of cultivation to me. मतलब आज तक किसी लड़की को आंख उठाया के भी नहीं देखा, किसी के लिए भी फीलिंग नहीं आई, पर जो उसके लिए आई वो फीलिंग मैं बता नहीं सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ। बस एक बार उसका एड्रेस मिल जाए, उसके पेरेंट्स से बात करना है। भाई पैसा तो बहुत है, क्यों जाट? अब मना तो लेंगे ही पेरेंट्स को, क्यों जाट? Though she never took me on as a formal disciple, I always saw her as my master. Whenever she took out her tools to work on mechanisms or new inventions, I would also stand next to her and watch. I even contemplated completing my training and becoming an adeptus in my own right. I followed her teachings, and time gradually passed us by. Until that fateful day 50 years ago. 50 years ago? During the drought that struck Liu. That's right. Master regaled me with many stories of her past deeds. From them, I learned how she had saved people from a similar crisis in the past. She was the one I looked up to the most. More than anything, I dreamt of becoming an adeptus like her. I wanted to travel the land like she had, relieving suffering wherever I went, but I was still far from being a real adeptus. I possessed no ability to take on human form and fit in with the crowd. Once she learned of my desires, Master prepared a special dose of human mimicry potion for me. She warned me that the potion's effects would only last 10 years, and if I were to fail to return to my original form at the end of that time, I would forever forget my past as a crane and become something neither human, beast, nor adeptus. Oh no. So that was the source of your dementia all along. But you never turned back into a crane. Indeed, I fell in love. Though he was human, he had spent his entire life training on Mount Tianheng. When we met, it was not only my first foray into the world below, but his as well. Although clumsy and impulsive as he was, you'd think he was the real strange bird among the two of us. But still, just like me, he cared deeply about the world and wanted, more than anything, to cleanse it of all pain and suffering. बस एक बार उसका एड्रेस मिले सीधा जाऊंगा उसके पेरेंट्स बात करने, ना माने तो फिर पक्का पैर पकड़ लूंगा उसके पेरेंट्स के। अगर फिर भी नहीं माने तो फिर बुला दूंगा, उसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। घर से उठवा सकते ना जाट, वो तो कर सकते हो। I could not help but fall for him, but my time continued to tick away. Those 10 years passed by in a flash. Yet... Oh no! What happened next? I committed an offense. I wanted to stay with him, even if it meant living a life full of pain and suffering, even if it meant that I would eventually turn into a monstrosity. I knew I had betrayed Master's hopes, but I was too ashamed to face her. So I wrote her a long letter instead and asked someone to leave it outside her abode. I was convinced that she would not support my decision, and I lacked the courage to speak to her face to face. In my shame, I fled and tried to hide from the world, such that no one would be able to find me again. The nameless heroine hits. But that was only the beginning of my troubles. I began to suffer from a strange illness. My memories became hazy and confused, and I could no longer keep myself awake. I understood that my pain was caused by my refusal to return to the life I was fated to lead. Along with my memories as a crane, I soon forgot the true cause of my suffering as well. I knew only that I had committed a sin. All I could do was pray for forgiveness, even if I had long forgotten what needed to be forgiven. Looking back,
I was beyond lucky to have come across that traveling merchant at Wangshu Inn. It was such a fortunate coincidence that we were there at the same time. If it weren't for those soul-revitalizing tea pills, Granny, what's wrong? Coincidence? Why did I ever think it was a coincidence? Tea pills concocted using the blood of an adeptus? No, it couldn't be. Master, don't tell me. Back then, that merchant was actually... Human custom would dictate the conferral of gifts to be in order when one's progeny is wedded, would it not? Consider the pills a symbol of one's best wishes. नहीं मैं उसे और उसके घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता, उसके लिए फीलिंग्स है मेरे दिल में। सुझा भाई ये घर से उठा के उस यूज और उसको पेरेंट्स को हर्ट नहीं कर सकता मैम। आई मीन घर से उठवा के डरा के धमका के लड़की का हाथ मांग सकता है ना जाट। मैं ये बोल रहा हूँ तो पावरफुल इंसान है। So when I tried to conceal my name and mistakes from the world and hide myself away in perpetuity, the only person I managed to deceive was myself. You knew where I was all along. One still remembers when you were but a fledgling. You possessed a certain fondness for a particular game. You would hide yourself among a group of wild cranes, and as one found you with such ease every time. 'Tis a truth most evident. One always recognizes one's own, no matter what form they may take. Wait! Paimon's confused! So, Cloud Retainer, you found Yuendai again? But how? When? And what happened after that? Perhaps it is now time for one to recount the rest of the tale. Follow the memories to find truth. तुझे भाई घर से उठा Free Omni ban for 3 days, one time only, special premium offer. नहीं सूझा भाई ऐसे नहीं कर सकता, मुझको पता है कितना हर्ट होता है। मैं डरा धमका के उसके हाथ नहीं मांग सकता, ऐसा मेरे संस्कारों में नहीं है। अच्छा। One was furious upon receiving your letter. Seized with anger, one set out to bring you to your senses. अरे भाई this area looks different. In truth, one had more than a few misgivings about your chosen partner. As an exorcist, his talent was lacking. One could hardly say his skill with sigils was any better. But soon, one came to appreciate the devotion he bestowed upon you during your illness. He never uttered a complaint and rarely left your side. Unwilling to begrudge someone of such character, one decided, wishing to grant you a life without regrets. One gathered many divine ingredients and used one's own blood to create a form of medicine. Though imperfect, it meant as for how to deliver the medicine. After much contemplation, one eventually decided to perform the deed oneself. One took great care to alter one's features and select the appropriate attire. Only after meticulous scrutiny did one finally set out for Wangshu. As one expected, you were most ignorant of one's true identity. You showed not even the slightest inkling of recognition. One was quite torn. Should one have celebrated the success of one's disguise, or mourn the loss of your acquaintance? Genshin not beautiful anymore. Good night शुभरात्रि का जो तो तुम लोगों ने अभी भी क्लाउड रीडर को भी मूछ और दाढ़ी देख लिया क्यों का जो तो तुझे भाई जिसके लिए मेरे दिल में
फीलिंग है उसी और उसकी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकता। Skyward! Scatter! Nevertheless, one would speak to you about another matter, if you are amenable, even considering your loss of memory. One was simply flabbergasted that you could so easily forget the consequences of consuming medicine infused with Adeptal blood. Its proclivity to attract monsters is hardly that complicated of a concept to remember. To think that you tried to travel while weak from sickness and heavy with child. Had one not intervened to clear the fog, all of you would have been lost during the night. Scatter! Skyward! Seize the skies! Scatter! Skyward! Make way for the Adeptus! Those monsters would hardly have pursued you with such ferocity without sufficient incentive. They were likely incited by the presence of godly remains. Said godly remains, in turn, were likely drawn to the trace of one scent on your body. One was, after all, an active participant in the Archon War. Some of the gods were likely shattered by contraptions of one's very making. In the end, one was relieved to see you endure through the night. At the break of dawn, one heard an infant's cry pierce through the air, and one saw you carefully cradle the child to your chest. Although certain mortal matters remain foreign to me, one could not help but be moved by your joy. To see you happy, that was more than enough. Now you should have a complete understanding of the events. Wait! But if that's true, then the crane who took care of me when I was sick must also be... Ah, one had almost neglected to recount the absurdities of that tale. ये मस्त बनाया इन्होंने। Just as you and I troubled one with her antics, so did you give one many a headache. Upon finding you burning with fever, one made plans to bring you back to one's abode for treatment. However, upon seeing one's form, you began to cry, refusing to get on one's back. When one asked you why, apparently you believed that one could not possibly be a true Adeptus, because all illuminated cranes are white from tip to toe. One had no choice but to apply powder to one's body to conceal the variegated nature of one's appearance. You became more than amenable enough when one stood before you devoid of any other coloring. It bears mentioning, however, that as a crane, Yuendai was nearly entirely pure white in color. Though you had never encountered her in that form, you still recognized the essence of her being. Perhaps fate brought you two together in more ways than one. कल सारी रात मुझे नींद नहीं आई उसकी यादों में। कल तो बोल रहा था मेरी वजह से नींद नहीं आ रही, आज बोल रहा था उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तो डिसाइड कर ले नींद किसकी वजह से नहीं आ रही है जाट तुझे। तो खुद कंफ्यूज है जाट की किसकी वजह से नींद नहीं आई मेरे को।
करके. Now all has been revealed. One owes you an apology, you and I. One recognized you upon your very entrance into Wanmin restaurant. One has always viewed you as a disciple of equal standing with Ganyu and Shenhe. Indeed, one wished to bring your story to a satisfactory end with this visit to Liyue Harbor. Still, one could not reveal your identity right away. Had one simply informed you of all you had lost, all those cherished memories would merely have become the fictionalized account of another. Memories are most meaningful when recalled by those who lived through them. Master, I must ask, if you found me all those years ago, why did you leave me be, even though you knew about my mistake? One has never regarded your action as a mistake. When it is time for one's progeny, 'tis a refuge referred to by many a name in mortal writing. Home, nest, One speaks, of course, of a place not unlike one's own abode. One's disciples are free to come and go as they wish, yet the door remains forever open to those who wish to return. Thank you. You and I. One expects you too have sensed the rapid deterioration of your condition as of late. 40 years ago, you chose a path without a future. Though one used one's own blood to provide you with a few decades of extra time, it merely delayed the inevitable. One may have extended the path, yet one was unable to alter its final. Even the power of an Adeptus has its limits. Had your condition continued to deteriorate, you would have forgotten your life as a human entirely. In the end, you would have turned into a creature lacking in the ability to even comprehend its own monstrousness. सुनो, आपकी वजह से परसों नींद नहीं आ रही थी. कल तो आपने बताया था कि आप ठीक हो, आपकी टेंशन कुछ कम हो गई है. मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता था कल, फिर मेरा सोचा कि आपकी तबीयत है इसलिए नहीं बताया. अच्छा ऐसा जाट. Fortunately, you were able to avoid that scenario by reclaiming your memories. Though one sped the process along by providing some guidance, the result is... So, what? One will help her reclaim her original form as a wild crane. If it be fated, she may recover her sentience one day. She's gotta go back to being a regular crane, huh? Is there Master, no way? You've already done more than enough for me. I don't know how I could possibly repay your kindness. This is a better result than I could have ever hoped for. Not long. The transformation is imminent. Granny, please don't leave, okay? You're all I have left. Please. Don't be sad, dear child. Granny has led a wonderful life. My only regret is having to leave you behind. Don't forget to eat well, okay? A growing young lady like yourself needs lots of good food to grow big and strong. Promise Granny you'll take good care of yourself when I'm gone. I promise, Granny. I'll do whatever you say. Good girl. Good girl. Don't worry. It's not goodbye forever. Granny's gonna become the most formidable crane in all of Mount Outsung. Granny will train day and night. I won't stop until I can turn into a human without having to rely on anything but my own power. When that day comes, that's a good girl. Even though we won't see each other for a little while, as long as we both work hard, we're I'll eat well, Granny. I promise. And I'll wait for you, no matter how long it takes. I'll wait for you to come back. That's a good girl. Then Granny really has no more regrets. I'm so sorry, Master. Thank you.
आज तक किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं हुआ आपके अलावा, और वो कल उस लड़की को लेकर सीरियस हो गया। बस आपके अलावा कोई लड़की नहीं है जिसके मुझे यादें आए और मैं सो नहीं आया कल रात। ठीक है जाट, हमें पता है तुम इमोशनल हो गए हो बहुत ज्यादा। Shoo. Let her be. At her age, crying is a natural, if not fitting, response to such an event. Tears are a necessary part of maturation. Sometimes there is scarcely a better vehicle to wash away the toll of stress and misery. Now that the issue has been resolved, you should also take a moment to relax. Give yourself some time to rest. Take a nap if you must. One will wake you. I always believed we would see each other again, that our days of separation would finally end, and all my troubles would be behind me. If only things could stay this way forever. A nightmare? Curious. If you're relaxed, shouldn't your dreams be pleasant? It was a good dream. It's just... You weren't ready to wake up. Eloquent as one may be, words of comfort are not one's strong suit. You are doing all you can. One can see your strength of will, your fearlessness in the face of danger. And so, whatever your dream may be, one believes that you shall achieve it. Of course, whenever the perils you face overwhelm you, or you become weary, one is always here for you. After all, as an elder, it is only right to look out for the young ones. बेस्ट स्टोरी क्वेस्ट। भाईवन को देखो खाना खा रही है उसमें नींद में भी। बेस्ट तो नहीं बोलूंगा बट हाँ अच्छी थी लार्वेन स्टोरी। मैं भी गोद में बैठ जाता, मुझे भी पास बुलाती तो। क्यों वाह वाह लार्वेन, बड़ी लंबी लंबी सोच रहे हो हैं। Huh?
Was Paimon sleeping just now? Oh. Oh, Paimon wasn't talking to you. Paimon had a dream about eating grilled chicken drumsticks, that's all. Madam Adeptus? Oh, Shuyu, you're awake. How do you feel? I feel a little better. Thanks. I know I'll see Granny again someday, so I don't feel so sad anymore. Madam Adeptus, could I ask you something? Would you take me in as a disciple? Oh, and have you reasons for this sudden interest? I know Granny thought what she did back then was wrong. She felt really bad about it, but without that mistake, I would have never been born. Even though Granny lost her memories, she never forgot to show me how much she loved me. So, I thought maybe one day I could become a cool adeptus like you and help a whole bunch of people, just like Granny wanted to do. Upon some reflection, one supposes you are no mere mortal. The fact that Yuendai's blood flows through your veins is proof enough of that. If this is what you desire, one shall make it so. Thank you so much, Madam Adeptus. No, I mean, Master. Shuyu, are you sure about this? Paimon's gonna let you in on a little secret. We've seen Cloud Retainer's 2 other disciples, and they pretty much eat nothing but bitter herbs like GENSHIN and violet grass. If you join them, you'll never enjoy One Min Restaurant's delicious cooking ever again. How utterly preposterous. One has never enforced such a rule. Every individual must find their own path to enlightenment. So long as one retains a pureness of spirit, one's dietary proclivities are quite irrelevant. Well, you say that, but Paimon's not seeing any tasty treats up here now, is she? Although Mount Outsong is rich in natural beauty, its location does preclude access to certain finer mortal comforts. Interesting fact, सेन्हा एंड गान्यू का नाम मिला के ये बच्ची का नाम हुआ है शूयू. देख, आई कैन सी यू, आई कैन सी एस यहाँ पे, बट एच यू कहाँ से बनता है इन दोनों के नाम से मिलके, ये बता मुझे. That is precisely why one plans to relocate to Liyue Harbor. Shu Yu shall have the honor of becoming one's first disciple in the human world. Whoa! You're leaving Mount Outsong? Is this why you took this human One form? has never concerned oneself with the location of one's residence. From the very beginning, yet in the end, all of one's disciples ended up in Liyue Harbor. Ganyu, Shenhe, Yuandai. One has reflected on this fact for many years now. One can only assume that it is due to some failing on one's part as an elder or master. A failing, perhaps, of recognizing what it was they truly want. One is most curious as to what aspect of Liyue Harbor could have enticed them to remain there. Why are you all so silent? Paimon is, just a bit shocked, that's... One has precious little time to squander. However, if one finds oneself otherwise unoccupied, one would not be opposed to the idea. सेन्हा का SH and U stands for under 18 and गान्यू का U. लार्विन, ये तो तुमने कुछ भी लॉजिक दे दिया है. ये कुछ भी लॉजिक दे दिया तुमने. मैं तो आर्ग्यू भी नहीं कर सकता इस लॉजिक को. कुछ भी लॉजिक दे दिया तुमने यहाँ पे. One will be assuming the identity of a human while residing in Liyue Harbor. You should take care to avoid disclosing one's true identity. Don't worry, we'll help you keep it a secret. So, when can we... Perhaps in 2 days' time. One has some matters to see to before one's departure. Preparation is the key to success, after all. One plans to put up various items from one's collection for sale. The earnings should provide for a comfortable... One has already picked out a handsome property near Chuhu Rock. 'Tis no small purchase, but
What is mortal life if not one Seems like you've really thought of everything. Then how about we meet up in Liyue Harbor in 2 A sensible plan. Oh, also, why don't you take this suspensus somnium mechanism as a souvenir? Anytime you should feel ill at ease in the future, you may try quieting your mind and sitting in meditation as you listen to its melodies. Awesome! Thanks, Cloud! Hey, didn't we promise Shincho that we'd tell him what we found out? Should we make a trip to the Feiyun Commerce Guild? It's total... इसलिए तो मैं लॉयर नहीं बना, नहीं तो जज भी जॉब छोड़ देता। ऑलरेडी भाई वो तो पहले ही बोल दिया होगा भाई, देख तू लॉयर बना ना तो मैं जज की कुर्सी छोड़ रहा हूँ। उसने जज ने सीधा बोल दिया होगा, पता है तेरे को लाइक डिग्री सिलेक्शन से पहले उसने बोला होगा, पक्का बोला होगा। तो जो भाई 3-4 दिन पहले मेरे दोस्त की हल्दी थी, वहां गया था। उससे मिलने के बाद मैं एक रूम में जाकर बैठ गया। आंटी आई और बोली खाना खा के जाना, और मुझे अपने साथ हॉल में ले गई और वहां बैठा दिया मुझे। वहां लड़कियां डांस कर रही थी। आंटी ने मुझे हलवा ला के दिया और मैं अकेला बंदा लड़कियों के बीच में बैठा हलवा खा रहा था। कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुमको लड़कियों के बीच बैठने को तो मिल रहा है ना जाट। लोगों को वो भी नहीं मिलता, पता है। We meet again, dear. Great! And it's off! Ah, I see. So the stories didn't get it right after all. Even though she was a celebrated thank goodness for the help of that Adeptus. At least she was. Although I cannot claim to know exactly how their story will unfold from here, I trust the ending will be a happy one. Thank you for helping me fill in the gaps. And don't worry, I'll keep this all to myself. लड़कियों के बीच में बैठता तो नर्वस होकर फाट कर देता, सब भाग जाती। अरे वो फाट भी करता ना तो भी नहीं भागती, क्योंकि सुनाई नहीं देता किसी को। लार्बिन उसने अभी बोला ना कि गाना चल रहा था, लड़कियां डांस कर रही थी, तो वो फाट भी मार देता ना तो किसी को मालूम नहीं चलता। वो सोचती कि किसी और लड़की ने मारा, वो थोड़ी सोचती कि लड़के ने मारा है फाट। Your concerns are excessive and unfounded. This is but a simple collection of ordinary valuables. Such intense scrutiny is hardly necessary. To be quite honest, your insistence on that fact is my primary cause for concern. In what way are any of these ordinary? Every single item here could be worth more than everything I own combined. I simply can't risk shelling out that kind of mora without proper scrutiny. If I'm wrong, I would never be able to earn it back, not even if I worked every single day for the rest of my life. I have to be careful. Yes, you can never be too careful. We're here, Cloud. Miss Shenyan, what are you guys arguing about? Ah, perfect timing. This ignoramus is questioning the authenticity of my wares. I'll have you know, these items have remained untouched in my personal collection for several hundred years. To question their legitimacy... Several hundred years? Indeed. They're family heirlooms, you see, passed down over many generations. Yep, they've definitely been around a while. We can vouch for her on that one. Hear that? Had I not found myself in need of mora, I would scarcely have had the heart to part with them. Indeed, you should consider it an honor to even have the opportunity to behold them with your own eyes. Doubt their authenticity any further, and I may just decide to take them to another buyer. Whoa, please don't go! I apologize for any insult, miss. You see, I know full well that I lack the knowledge to judge the true worth of these items. If you could wait but a moment, I've hired an expert to appraise them for me. He should be here shortly. An expert, you say? Very well. I will wait for a little while longer, then. Traveler, Paimon, this is my new residence. If you have cause to seek my company in the future, this is where you can find me.
उन लड़कियों में भी किसी के लिए फीलिंग नहीं आई। जो लड़की शॉप पे मिली थी पता नहीं उसके लिए फीलिंग आई थी। मेरे को 26 साल हो गए, डेली दिल आता है किसी न किसी पे। अभी रिसेंटली चोमियो चोमियोन पे आए है। चोमियोन ये कौन है भाई? लार्वेन लार्वेन मेरे किसी पे नहीं आया, बस जो लड़की मेरे परसों देखी उसी पे आई है। ब्रो इज गे। Master! Oh, it's you two again. Shoo-you! You got a new outfit! It looks great on you. Mm-hmm. Master made it for me. I like it too. Huh? You know how to make clothes? Do I know how to make clothes? With the support of the proper mechanism, sewing is hardly a challenge. Master, I brought in most of my stuff. There's a few boxes left, but they're kind of heavy, so I just left them outside. Fret not. I shall help you move them into your room. Actually, I should probably sort through my stuff a bit first. Everything's kind of messy right now, so maybe you could not look yet, Master? It appears my young apprentice has her own fair share of secrets. No matter. Now, this expert you mentioned, when can we expect their arrival? Soon. Here, allow me to make some introductions. This is Mr. Zhang Li, a well-respected consultant at Wangshang Funeral Parlor and an expert in all manner of valuables and antiques. Mr. Zhang Li, this is Miss Shen Yun. She's the one who's looking to sell the collection of valuables I mentioned earlier. भाई वहाँ क्या सीन है देख रहे हो? सियान्युन को सामान बेचना है और उस बंदे ने जोंगली को ही बुलाया है, और जोंगली मना तो करेगा नहीं, उसको पता है तो इसका सामान बिकने वाला है, अच्छे प्राइस पे बिकने वाला है। डोंट गूगल चोमियोन, अब तो करना ही पड़ेगा मुझे। अब ये कौन है मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, साउथ इंडियन सिंगर एंड एक्ट्रेस है। वाह भाई लार्वेन। Huh. If it isn't Miss Shenyun. It has been quite some time since our last meeting. What a serendipitous reunion. Indeed, most serendipitous. Have you been faring well as of late, Mr. Zhangli? Quite well, thank you. I was fortunate enough over the past few days to enjoy both a stroll in the mountains and a fresh brew of tea from the most recent harvest. The experiences left me with such insight and peace. Huh. So you two are already acquainted? Indeed. How fortunate we are that fate has brought us together again. If you are otherwise unaware, allow me to inform you that Miss Shenyun is a well-regarded collector and appraiser. She is well-versed in all fields, and oft-celebrated for her impeccable taste. You stand to gain much from this opportunity. You are too kind, Mr. Zhangli. True collectors pride themselves on their wealth of knowledge and eye for detail. I can say without a doubt that you are foremost in that regard. Why, you flatter me, Miss Shenyun. It would seem that you are as self-effacing as ever. Not at all, Mr. Zhangli. Not at all. While I am loath to butt into this conversation, I must ask, you two already knew each other, and you seem to have quite a cordial relationship. Can I be certain that you're not working together to swindle me? I mean, you never know. Huh! A preposterous accusation. The heavens themselves would collapse before we would conspire to do such a... Miss Shenyun speaks the truth. Contracts are built on honesty and trust. If that proves to be beyond your capabilities in this instance, this transaction may be taken elsewhere. मैंने किसी लड़की पर दिल नहीं आया, किसी पर ध्यान नहीं गया। जब सब तुम वो लड़कियों के लिए मेरे और सुझा को वेलकम दे दो। मैं कैसे बता दूं जाट, वो तेरी दिक्कत है, तेरी फीलिंग्स है। मैं तेरी फीलिंग्स को थोड़ी कुछ कर सकता हूँ। तेरे दिमाग में जो आता है ना वो कर जाट। सारे हाथ पैर मार, सारे तरकीबें मार, कुछ ना कुछ से काम चल जाएगा तेरा। Say no more. Let us depart.
I jest. What fool would still harbor doubts after Mr. Zhongli himself has vouched for the goods? Miss Shenyun, wait. I deeply apologize for doubting you. So, Mr. Zhongli, could you please give me a final verdict on the value of these items? There is no cause for concern. They are indeed rare and precious valuables. Take this mechanism, for instance. Though one may not immediately perceive its purpose, its structure and appearance are exquisite enough to merit it a place in any fine home. The same can be said for this one here. Few could hope to possess an item that so perfectly blends mechanical wonder with geometric grace. I am sure you have heard from your travels that the study of mechanisms is among the most wondrous arts in this world. With that in mind, I earnestly recommend procuring every last item in this collection. All right. Since I hired you as my consultant, Mr. Zhongli, I shall, of course, trust your good opinion. Then, in that case, Miss Shenyun, I'll take the lot. However, since the final sum is quite large, how about we start with an initial deposit through the Northland Bank? The Northland Bank? Huh. Oh, you refer to the fiduciary house. Oh, very well. I fear people only use the term bank nowadays. In that case, I'll be off for now. I'll return to collect the goods once you've received the funds. लार्वेन जिस दिन वो मिली बता सकता 4-5 भल्किन दूंगा। अब मिल तो गई है जाट, अभी तुम्हारी बस बात होना बाकी है, प्रॉपर गर्लफ्रेंड बनना बाकी है, तो वो तो होता रहेगा। तो इसके बेल्किन अभी दे दो हमको जाट, हम दोनों को। तुझा भाई फिर भी कुछ बता दो, क्या करूं, दिमाग खराब हो चुका उसके लिए। लार्वेन से पूछ, लार्वेन एक्सपर्ट है इस फील्ड में, पता है जाट। लार्वेन बताएगा तेरे को जाट, उससे My friends, have you been doing well? We've been great. How about you? Paimon didn't know you were such a busy My days have been quite pleasant as well. I had been quietly enjoying a cup of tea when Mr. Xiaozu requested my services. As for you, Miss Shenyun, I presume you must be looking to settle in the city? I must say, the name Shenyun sounds exceedingly strange coming from you. Perhaps you could dispense of that particular epithet in further conversation. Whatever for. Am I not addressing you as a friend should? Well, that is true, but... Alas, refer to me however you will. After all, a name exists such that others may address you with it. It would seem that you have One has indeed. One's previous days were all brief. Now that one has made up this city is much changed from how it was more than 1,000. Not unlike the ocean tides, so too shall the movement of people ebb and flow. From turmoil to peace, enlightenment to aspiration. Human society possesses limitless potential. In another 1,000 years, the scene we witness here may change in ways that are impossible for either of... Alright, that's enough reflection for one day. No need to get all sentimental on... You make a valid point, Paimon. Now that the sale has concluded, what say one plays the host as we try some specialty dishes together? One must profess great interest in trying bamboo shoot soup. Perhaps you have forgotten, Cloud Retainer, but I once tried my hand at that dish. You were at the table on that occasion, so logic dictates that Oh? It was a reunion between friends several centuries ago. Alas, you must have been too preoccupied to secure yourself a portion. Or perhaps our other companions... Hardly. 'Twas most certainly out of consideration for the others in attendance. It is settled then. Bamboo shoot soup, mora meat, crab roe tofu, triple layered consommé. We shall enjoy the lot. One has already passed word to Shenhe and Ganyu to make a reservation. It is prime time for them to meet one's newest disciple. It should be a most splendid... Shuyu, come now, it is time to dine. Ah, this gentleman over here is Mr. Zhongli. He is, A humble employee of Wangsheng Funeral Parlor. Nice to meet you too, Mr. Zhongli. That should be everyone, right? Let's... Sounds good. Actually,
Master, have you ever tried Adeptus' temptation? I heard it's impossible to stop eating after even just one bite. You know, 'cause it's super tempting and... That sounds rather implausible. Although with the right preparation... Huh? Why are you all walking so fast? Hey, wait for Paimon! Hey, wait up! ये मैंने बताया है, पिकअप लाइन बहुत हॉर्नी है। I will be your tasty grilled fish. लार्मन मजाक मत कर भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग वैसे भी खराब है परसों से। अरे वो अच्छी पिकअप लाइन तुमको बता रहा है, तुम ले ही नहीं रहे हो यार, तुमको मानना ही नहीं है, हम लोग कुछ भी बता ले तो। गजब आदमी हो भाई। फाइनली भाई साइड क्वेस्ट खत्म हुआ, बहुत लंबा खिंच गया, कसम से बता रहा हूँ। ओ भाई खत्म ही नहीं हो रहा था, मेरे को लगा खत्म ही नहीं होगा आज ये। पाइमन कैन ईट लिक बाइट सच टेस्टी ग्रिल्ड फिश, समझ लो पिकअप लाइन। आई डोंट थिंक सो पाइमन लिक्स द टेस्टी ग्रिल्ड फिश, आई थिंक शी ओनली ईट्स टेस्टी ग्रिल्ड फिश। What should I try this time? चलो मैं 12 बज गए हैं, मेरे को नींद आ रही है अभी। चलो दैट्स टुडे गाइस, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग इन। कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ गुड स्लीप एंड हैव अ ग्रेट डे फॉर टुनाइट। सभी को कल मिलते हैं दोपहर का टाइम, बाय बाय सभी को। मेरे पास नहीं है भाई पैतरे जाट, मैं नहीं बता सकता तुझे पैतरे। चल बाय।